Roger. Khajuraho. Assigning you as Khajuraho Tower. Victor Tango, Mike Sierra Lima. Victor Tango, Sierra Sierra Mike. Victor Tango, Sierra Sierra Mike, Victor Tango, Mike Sierra Lima. Go ahead. Khajuraho Tower. Victor Tango, Sierra Sierra Mike. On taxiway Charlie 1030 during taxi lost inadvertently entered wrong area took a right turn after Lima 1 Boeing 737 holding position request follow me Hold position. Expect follow me in 02 minutes. Khajuraho Tower. expecting follow me in 02 minutes holding position Victor Tango Sierra Sierra Mike. Roger, Victor Tango. Correction, Khajuraho Tower. Pan 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 pan. Victor Tango, Oscar Mile Golf. Relay message to Mumbai Tower. Aircraft low on hydraulics. Controls are sluggish. Aircraft position over Mumbai. Flight level 70. Radial 073 inbound. Bravo, Bravo, Bravo. Request emergency landing at Mumbai and descent, as well as medical services on arrival. Station calling Victor Tango Mike Oscar correction. Station calling Victor Tango Oscar Mike Golf. Say again after pan pan and before aircraft position. Station calling Victor Tango Oscar Mike Golf. Say again call sign. Call sign Victor Tango Sierra Mike Sierra. Victor Tango Sierra Mike Sierra. Victor Tango Oscar Mike Golf. Say again all.
Pan 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 Pan, Victor Tango, Oscar, Mike Golf, relay message to Mumbai Tower, aircraft low on hydraulics, controls are sluggish, aircraft position over Mumbai, flight level 70, radial 073, inbound Bravo Bravo Bravo, request emergency landing at Mumbai and descent, as well as medical services on arrival. Mumbai Tower, Victor Tango Oscar Mike Golf, relaying for Victor Tango Sierra Mike Sierra, aircraft low on hydraulics, controls sluggish, aircraft position flight level 70, radial 073, inbound Mumbai, request emergency landing and descent. Victor Tango Oscar Mike Golf, Mumbai Tower, emergency landing cleared and cleared to descent flight level 10. Roger, emergency landing cleared and cleared to descent flight level 10, Victor Tango Oscar Mike Golf. Students, very, very well done. Very good morning, everyone. Excellent. I'm so happy to hear these calls. I mean, if you do the same thing in the exams, the examiners might actually stand up and give a pat on your back or maybe a few round of applause. Very well done. The way you're talking, the way you're replying, there's a short gap. You're thinking it's less than 5 seconds. The rate of speech is good. And I can actually sense that you all are thinking and writing and giving each other situations that are so tricky. And yet you're able to formulate sentences with minimum number of errors. This is exactly what you're supposed to do. This is exactly what you're supposed to do. So how's the experience? I think Om took the call. Suchita took the call. Muskan took the call. Couple of call signs. A little, because I was multitasking, I could not make out couple of call signs, the guys who were talking. But I could see on the system that Om was on unmute. So I realized it's Om. Remember, students, put some energy in your call signs, in requests. Those are prominent things. The thing that you're requesting, request start up. That should have a little extra energy, and your call sign should have a little extra energy. The other person's call sign should have a little extra energy compared to other things in your call, right? So that it is prominent, so that even if somebody is multitasking, which is actually everybody's job to multitask,
keywords can be easily heard. That's why we use words and phrases as much as we can, because it's all about keywords in the end, because we just need to get the sound of the keyword and we know what the correct word is. Overall, a very well executed first few minutes of the session. And I hope the human factor has kicked in. You have been waiting 30 minutes without anything, but this is what you're required to do. Okay. 10 is your time. You just be ready for any surprise anytime from there on when it comes to mock. So very happy to see everyone, and not really, this is what I was expecting. And I'm very happy that it took you just 3 lectures to get to this pace or this rhythm that you finally get what you're supposed to get. So a round of applause for everyone, students. It's not that easy. It's not that easy for a class to collectively behave in a certain way, but it is easy for you all because you're all experts now. Very, very warm welcome, students. Jyotsna, Ananya, Shavi, very good morning. And good for you. You have not missed anything. Jyotsna, I missed you yesterday in the class. Don't worry. I have plans. Couple of days you will be seeing. We'll be executing all those plans. Very good morning, Suchita, Gulshan, Rohita, Sridhar, Ayush. Ayush, I hope you're keeping well. Om, very good call. A little bit more energy. Rani, very good performance yesterday. Waiting to see what you're going to do in your next mock. Feel free to ask questions. Suchita, once again, good morning. Nukul is here. Very good morning, Nukul. Good to see you, Gurpreet. Good morning, sir. Very good morning. Chalo, Gurpreet आए हैं, अच्छा लगा Good है. morning, sir. Good morning, Prerit. Very good morning. Muskan, very, very, very good morning. I'm not sure if you're expecting anyone else right now, but the question paper is ready. I'm just going to send you all an email. 1 second, Muskan, stand by. The question paper is Standing by. ready. Victor Tango, Mike Sierra Lima. The question paper is ready, and I'll be sending it to you. Sorry, no further discussions or anything until we start the mock. But yeah, if you have something on your mind, feel free to ask or discuss right now. Otherwise, the drill I'll just explain for students who were not there yesterday. I'll be sending the question paper to everyone. Today's mock will be taken by Victor Tango, Mike, Sierra Lima, Muskan. The moment Muskan says I've received the question paper, I will start the timer for 25 minutes. That is 5 minutes in RT. Everybody will write the question paper reference because in the email you'll also have it. You just download it. Next to the question paper on the second page is a chart. This chart might be slightly different from the charts that we are using or the chart that you're going to get in the exam. But you use this chart only that is given to you in the question paper right now. This will help you exercise calls through a variety of charts with some minor variations. That way, you will also be expecting, okay, there's an old chart, the chart that you have, and then there's a new chart. We do have the new charts, but it is by some other institute. We cannot infringe on the copyright. But if you all want on request, I'll just share with you all so you can manage the differences between the slight variations. Like couple of things are mentioned, otherwise nothing changes though. So you will use the chart which is attached to the question paper right now for this mock. Okay. And students who are not doing mock, it is a very good learning experience for you. Do not get distracted. 25 minutes, observe what is happening by the instructor, what is happening with the student, how is the student speaking, writing, where is the student getting stuck. You will observe as a student as well as an instructor. Okay. That way you get an upper hand. And you write everything, and you also try to correct or add points towards your calls or whatever, so that in future you can also discuss or you can also learn from your mistakes. Everybody has to be involved in this. Okay. So make sure you are a part of it. Students who have not attended many lectures, for you, it might be a little bit of over the head thing, but be in the moment, try to understand as much as you can, or just take it for an experience, because eventually you will get there and eventually you have to do it. Right? So that's the idea. Keep an open mind, work hard, and be a part of this exercise, because eventually, again, you will be doing it in a couple of days or a couple of weeks or a couple of months. One more instruction I want to give you all. Remember the training.
Do not rush into answering the paper questions. Read the flight plan, track it on the chart, cross-check location designators, cross-check departure, arrival, aerodrome, call sign, cross-check the intent that you'll have to take. Intent should be overruled or should be guided by the safety concerns of the aircraft, and your communication should be guided by the RT procedures, call structures, call signs, phrases. Nothing else. It's all basic that you have to execute in these practice mocks. Remember from yesterday's class, Rani made a lot of technical errors, but her basics were so strong that even though making technical errors, she was able to score 56. Passing is 50. So she has done her job, even though she was very scared, nervous, not really feeling that I know things. But she pushed herself. The paper was very tough, but she finished the paper. She was fumbling here and there, but she didn't give up. Every time when the examiner gave her a hint or something, she came back strong and she proved herself, though I can do it. Even in Viva, if you observe, okay, she was not knowing a few answers, but she tackled it well. And when the examiner said, okay, take your time, she actually took the time and she was able to give more points to the answer to that question. The strategies that we teach actually work. In the exam, if the examiner is not as friendly as yesterday's examiner, okay, then you do the same. Okay, I have been asked something, I cannot recall it. Like I asked Rani, what is ILS or what is VOR? She was able to answer, but initially she was stuck because instantly things don't come to your mind. You have learned 1,000 things. What will come up will take time, whatever question. So you buy that time. You say, okay, sir, so the question VOR, give me a moment, I'll tell you what VOR is. You buy time like that by talking. You have given a correct answer, although you have not spoken anything. So VOR as an abbreviation stands for Very High Frequency Omnidirectional Ranging. It is a radio navigation system used for direction finding, navigation, maintaining a center line of the runway, homing, let down procedures. Explain everything one by one. So you buy some time, the time that examiner gave you. So you are in a safe position in both places, whether you have a helpful examiners, whether you don't have helpful examiners, strategy remains the same. Now, what happens in the worst case scenario for part 2 Viva? Let's say I ask something that you have not studied. Tell me about the Indian Telegraph Act or Indian Radio Act, Radio Telegraphy Act. It's there on the form. And when I've given you all the link to submit the form, it's mentioned there and I've highlighted that also. That remember students, this might be asked. But what happens? We just don't realize because we don't memorize. It's not regular. So that question we don't know. How do we tackle that? The examiner will not all examiner will say, okay, bacha, take your time, no rush. Ideally, they should do that in an interview. Some people might not do it in RT exams. How do we make sure that we get the time so that eventually we give the answers? So, okay, sir, Indian Telegraphy Act. Okay, it was the act where radio regulations were formed. I am aware of it. RT, WPC, everything is based upon that act. Not just that act, but we also have Indian Aircraft Act 1934 and Indian Aircraft Rules 1937. Then we also have ITU, we also have ICAO. Let's start talking about ITU, ICAO, WPC, DGCA. Examiner will be like, okay. Either they will forget they asked you Telegraphy Act, or they'll be like, so you don't know the year? You say, so somewhere around 1950s or something, if you remember. Otherwise, I'm very sorry, but I'm unable to recollect. Don't say I don't remember. Rani, for you yesterday, you said, I don't remember. You have to say, I am sorry, sir, but I'm unable to recollect it right now. Just say that. I'm unable to recollect it right now. But what I do know is that every commercial aircraft and every certified pilot, every commercial aircraft should be fitted with an approved RT equipment, and every commercial pilot should have an approved license or license of proficiency to operate that. Only then they can fly in a commercial environment or a civil environment. So this is how you talk about basic things in your part 2 Viva with pointers. It becomes the most easiest interview in the whole world, and all interviews should be like this as a baseline. Over and above, you add on to your interviews with your experience. Remember this, part 1, part 2, simple strategies. You get there eventually. If you learn, try to do things differently. All right. Any questions, Muskan? Start.
What was on your mind? Sir, when the flight rule is IFR, we transmit as IFR from, for example, Mumbai to Delhi. Mhm. What if the flight rule is Yankee? Do we have to say YFR? Okay, this is something again I keep discussing, and it is something very tricky. Not really very tricky, but a little tricky. Let's take this example. Everyone, who can tell me what is the meaning of flight rules Yankee? IFR first, then IFR first and then VFR. अभी आयुष बोल रहा है तो आयुष को खत्म करने दो, फिर ही हम बोलेंगे. Only one person can transmit in an realistic RT environment, students. So Muskan, stand by. आयुष का खत्म होएगा. आप आंसर दे सकते हो. Okay, आयुष. IFR first, then VFR. Victor Tango. IFR first and then VFR. Very good. Muskan, what was the answer? IFR first, then VFR. Victor Tango, Correct. Mike Sierra. Students, the most important thing in regulations are flight rules. A very simple thing. There are only two flight rules by which or through which or as per which you can fly commercially. VFR and IFR. VFR is a big thing, not in India, but abroad. Basic hobby flying, general flying, private pilot flying, everything is easily achievable through VFRs. VFR require VMC. What is VMC? Visual meteorological conditions. So certain weather conditions, if they exist the way ICA or DGC everybody has determined in the rules, then we can fly as per VFR. You might be asked this, everything is there in your text, you need to read this, you have read it in regulations also. What is the horizontal visibility? What is the cloud height and ceiling? 2 to 3 elements only. If the conditions don't match the required conditions, if you are a VFR pilot, you cannot take off. You have to wait for the conditions to improve, or you can go for special VFR. Special VFR gives you a RVR of up to 1000 meters to 5000 meters. So this becomes a special VFR, but this is only for VFR flights. So normally the VFR visibility or RVR given to you is 5000 meters or above. But sometimes when you don't have runway visibility, 5000 meters, that is 5 kilometers, still you can request for special VFR in certain cases. If you have priority, if you have medical, something or the other, if you have you think you can make it happen, then you can ask for special VFR. One thing possibility, if situations go below VMC, you can call for a special VFR. If your visibility goes below 1500 meters. Now, what is this RVR? RVR is the distance you can see the runway markings while being on the runway. For how far can you see? What can block your visibility, students? Fog, smog, dust, rain, anything environmentally that is disrupting the clear air. Anything, it could be anything, fog, smog, or ash, or it could be just snow, it could be rain, it could just be some smoke from here and there, or a mixture of all those things. So that will reduce your visibility. Okay. So how do we know this? There is an instrument known as transmissometer. It is there near the runway. It measures the visibility. There are two laser type units separated at a distance. It shoots energy, it shoots or grabs energy, and in between they check determinant on the distance and time of the reception. They determine how good is the visibility. But it is all given to you in the Met report, DETIS, or any ATC, or anyone who's in charge. What are the other rules? IFR. Now, when your conditions are very, very bad as per VMC, when visibility is nil, when cloud and everything is bad, can you still fly? You cannot fly if you are VFR approved only, but you can fly if you are IFR approved. For IFR, you need IMC, instrument meteorological conditions. Basically, zero visibility also you can fly, but you need to be trained. The aircraft need to be approved. Everything has to be approved, certified, trained, etc., etc., etc. Now, IMC is something that you all use in our civil aviation.
especially when you're flying a passenger flight. We don't do VFR with passenger flights in civil aviation. Like, that is not what you are aiming for. So that is IMC. Now, if I look at it, then VFR flight levels can go up to maybe flight level 150 if you have oxygen. Otherwise, wherever oxygen limit exists, generally we assume it to be 10,000 feet. Then you won't go beyond that. But you will see in your flight level tables and all, VFR would be given up to a higher level. US and all, sometimes VFR is done at a high level because their transition altitude is very high, because the traffic flow is too much, that all the lower altitudes are occupied. In India, the traffic flow is not too much. That's why transition altitude somewhere becomes 4,000 feet, 5,000 feet. Students who don't know transition altitude, do the part 2 Viva booklet, read once nicely. It's all mentioned nicely. Coming back to the basic understanding of this point, sir, Yankee, Zulu, how do I understand? I have seen many students take this for granted and then make silly mistakes that cost them a session. It is that important, although it's very easy and it's often discussed a lot of times. I know VFR, I know IMC. What is this Yankee? What is this Zulu? How do I differentiate? So the key to know is that VFR flight levels might not go above this, while IFR flight levels can go up to flight level 460, the max assigned commercial flight level in India, we can say. Beyond that, charter planes will fly. RVSM is up to 410. Now, this is the difference. So if you have Yankee, flight rules Yankee, Yankee means IFR first, up to a certain point, and then VFR. What does it mean? If you are flying from one VOR to, let's say, another VOR, all right, then after climb, up to certain point, you will go IFR. Then from certain point, wherever you are assigned to change your flight rules, you will do VFR. If this flight level is 330, you cannot do VFR at 330. So flight rules Yankee, IFR first, then VFR. Then before you start VFR, you have to go to your VFR flight level. The difference will be wherever you change your IFR to VFR, or for flight rules Zulu, VFR to IFR, the key would be the point where you'll have to change your flight levels. And this point will be given to you in the exam flight plan or in the actual flight plan, somewhere near the route or the route section or in the other information section. It will be mentioned in terms of flight levels only, that up to certain point, this flight level, then from there on, that flight level. So if it's Yankee, first they will give you higher, then they will give you lower. So you'll have two cruising altitudes. One of them would be the one mentioned in the flight plan itself, IFR. The second would be mentioned near the route. In this case, if that is mentioned, it would be something like this. You will descend. So this is a vertical descent. We don't do that unless we have, what do we say, a drop. So I'll first descend. And here is where I will take clearance or say I'm changing over to VFR. Generally, there is a phrase that we have learned. We can say, cancelling my IFR, proceeding with VFR, flight level so and so, estimates and ETA. Never forget to mention your position report elements. Yesterday, Rani, you were not using radial and DME in your calls. Lucky for you, your basics were strong. Otherwise, 2-3 points you would have missed and you would be on the borderline. So radial, DME, estimates, ETA are compulsory in all calls. And then once you have reached here, let's say flight level 130, then you continue VFR and then land. Like this. So this point somewhere here is the point where you change. So before this point, you will request for descent so that you can do VFR. So you will have to descend at some point. Be very careful. It's not difficult. It is all mentioned in your flight plan. You just need to be careful and read it. So in the route section, it would be like, any example if we take, it could be like flight level 330 to Khajuraho. Thereafter, flight level 130 to probably, let's say, Banaras or Varanasi
What is the Bhubaneswar, right? This is Bhubaneswar. Yeah. So this, and here in the flight plan, you will have flight rules, Yankee. So these two things will combine. Where will Yankee fly IMC first or IFR up to a certain point and then VFR? So the changeover point will be Khajuraho over here. So up to Khajuraho IFR, from Khajuraho request descent, flight level 130, thereafter VFR to Bhubaneswar in this case. Similarly, in my flight plan, if I have flight rules Zulu, then my route will be like this. Flight level 130 to Khajuraho, flight level 330 to Bhubaneswar. It means I'll make it in blue in this diagram. It means top of climb is flight level 130 VFR, and then up to Khajuraho. So here I will climb, here I will climb, and then from here I'll go flight level 330, and then I'll land back again. So black IF Yankee, blue Zulu. Is that clear, everyone? This is absolute gold for you. Please never forget this. This doubt should never ever arise in your minds, no matter if it's a first class, second class, 10th class, 20th class, 100th class. What do you think? Share your thoughts. Muskan, I hope your question is answered. Affirm, sir. Understood. Students who have understood, take 2 minutes to study this thoroughly and talk to me. यहाँ पे understood हो गया है and आप study नहीं करोगे, बाद में भूल जाओगे. Under the pressure of mock and everything. I'm talking to everyone. जो भी नया चीज सीख रहे हो, पुराना चीज सीख रहे हो, 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट में 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी चाहिए. Generally 2 minutes should be enough right now for the exercise. Study it there, soak it in, discuss points, and then only let's move ahead so that we don't have to repeat the same things again and again. Everyone, study this point. I should see something in your notes. And why are you not sending me your notes, students? भूल गए क्या? क्लास के बाद ऑटोमेटिक आपको लेक्चर नेम, आपका नाम, PDF मुझे WhatsApp पे भेजना है after every lecture. वो only couple of students are doing it. सबको करना है, याद रखना है. PDF में भेजो, please. one image मत भेजो. All your data is secured in one place. So please, ध्यान रखना है, आज से खुद से भेजना है. More questions, come on. So, Anyone, we are ready for mock. so considering a situation wherein we are not having Yankee flight rules and we were just Suchita, read you to say again all Mumbai ground. You're on mute. yes, sir. So I got a call. Sorry. No problem. You can take the call. No, sir. It's fine. I'll take it later. Carry on. So, sir, we have IFR. We don't have Yankee flight rules, and we are flying as per IFR. But due to some reason, we have to change to VFR. We've done this before. So then also we can say like canceling my IFR flight due to some reasons and proceeding with VFR because maybe some instrument malfunction. It can be done. Exactly how you'll talk about it to the ATC. Request clearance, request descend or climb accordingly. And then in real time, if you change flight plan, if you change flight rules, inform the ATC at the earliest. If you don't have ATC, then after landing, inform the ATC at the earliest through the most readily available modes of communication. That is a line of regulations that I think everybody knows if you have attended couple of lectures that I've taken for regulations. Utane mein utna. So you're right, Suchita. That's how we do it. Roger, sir. Understood. Gurpreet. Sir, aircraft is requesting deviation by 17 nautical mile due line squad. Sir, what is line squad? गुरप्रीत को तो आइस बकेट चैलेंज देना पड़ेगा मुझे. Who will tell what is lines call? Nobody knows what's the lines call? Gulshan?
Sir, it is related to weather only, I guess. Maybe turbulence or thunderstorm or severe turbulence. अच्छा अच्छा, गुलशन का तो कुछ अलग ही चल रहा है। गुलशन खुद की टेक्स्ट बुक लिख रहे हो क्या? Sir, but something related to weather only, I guess. चलो सही है, समथिंग रिलेटेड टू बेटर वेदर सही है। Sir, it is a violent local storm. Okay, Ananya, very nice to see you participate. Students, lines call. Line means line. Okay, sub line mein. Or a call line. What is this call standing for? It's nothing but bad weather. But what kind of bad weather? Thunderstorms. Huge clouds, black clouds, thick clouds, long clouds with a lot of thundering and lightning. It might have rain, might not have rain. Okay, but it is deadly. If we have a localized thunderstorm for about a kilometer, it is deadly. 1 kilometer, imagine wherever you live, how much is 1 kilometer? Try to imagine. Lines call will have a length of such thunderstorms merged together in sequence in line over a huge distance. It means that the weather can go bad in a long area, and this lines call moves. Just like how cyclones or we track bad weather, we track through the Met satellites. Similarly, lines calls are longer stretches of thunderstorms which you have to avoid, which you have to report. Anything related to natural calamity, if you observe as a pilot, earthquake, flood, volcanic eruption, lines call, locust swarm. Locusts are big insects, and annually they fly or migrate from one place to another in a swarm of maybe 1 billion locusts. They become so big that even if you stand, they will hit you and they will injure you at the speed that they fly. That is also a calamity for us aviators. It can cause you a lot of damage. And FOD, engine damage, personal damage. So all these things, if you see, you use a special priority code for calls known as security, security, security. And this security doesn't end with Y, it ends with IE, I echo in the end, the suffix. And then you report that I've seen a series of lines call if I'm in air, this is the position, this is the request you to take necessary precautions. Or if the lines call is straight ahead of you, then you request for weather deviation. In this case, you might require to deviate as in reroute because the lines call will be huge. Or if you take, or you can take advice from the ATC also as to what can be done in this case. Should I go back or is there a way to just avoid this? Probably a higher flight level will help you skip that, based upon what you see on the weather radar and what clearances ATC gives you. Generally, pilot has a weather radar through which she or him can know that how would I navigate up and down to clear the weather through color coding on the weather radar. And then that's the clearance that you request ATC to give you over and above the standard aviation procedures that we teach you. So that's what you will do. A lines call, security, 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 inform about the lines call. If it's something that you're just observing, if it is something that is going to impact you, then accordingly take that call. It's a line of thunderstorms. Write down, okay? A call line or a lines call is a line of thunderstorms. It contains heavy precipitation, hail, HAIL, hail. If you don't know, just look it up. Metar lectures, Muskan, I have to send you today. I'll send you, remind me, students, whoever wants to go through Metar lectures, karke rakho. Okay. It contains heavy precipitation. Heavy precipitation. Precipitation means rain. Heavy rain. Okay. Hail, hailstones, solidified rain, you could call it, but hail has a different definition. Lightning, frequent lightning. Again and again, lightning strikes. We don't like lightning strikes. Students, how do we avoid lightning strikes in commercial airplanes? Through static discharges that are fitted on the wingtips. Okay.
Strong winds. And occasional tornadoes. Okay. I'll just show you one picture. ये सबने देखा होगा लाइफ में, स्पेशली मॉनसून. Okay, we are almost done with questions, students. I want to do the mock. So, जो भी है फटाफट पूछ लो. Especially anything to do with the mock if it's going to help you. See, this is how it looks. Lines call. These are CB clouds, all connected in line, making a train. दिख गया? It's Wikipedia picture only. Must be familiar with you. This is lines call. हो गया गुरप्रीत आंसर? Yes, sir. गुरप्रीत एक चीज बता रहा हूँ, पर्सनल भी लेना है, सबको सुनना है. जी. पढ़ाई आप जब करते हो ऐसे करो कि फ्यूचर में आपको 5 सेकंड में सब कुछ रिकलेक्ट होना चाहिए थ्रू सम लिंक. हम 3 महीने पहले पढ़ रहे हैं, 6 महीने पहले पढ़ रहे हैं, 2 महीने पहले पढ़ रहे हैं, और वो चीज हम अब भूल गए हैं इस तरह कि हमें पता ही नहीं है क्या है, और हम सेल्फ स्टडी में भी खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हैं. देन हम जिस हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, करे थे तब, वो अभी नहीं करना है, अभी उसके बेटर तरीके से स्टडी करना है. प्लीज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, नोबडी एल्स इज गोना टेल यू ऑल दीज थिंग्स. ये सब है ना, पर्सनल कोच वोच को हायर करके सीखना पड़ता है ये सब. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. अब हम बता रहे हैं तो आप यूज करो ये सब. ओके, आपको ही फायदा होगा, नहीं तो चलता रहेगा. बिकॉज आपकी लाइफ में इतने स्ट्रेसेस हैं और इतनी चीजें हैं कि आप हमेशा रेगुलरली नहीं पढ़ाई कर सकते हो. कुछ लोग तो उनको दिक्कत होती है, एग्जाम टाइम पे क्लियर नहीं होती, पढ़ाई पूरी नहीं होती, फिर जब वापस पढ़ते एग्जाम देते हैं वही रिजल्ट आ रहे हैं. मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो ही रहा है. So you be very careful that you find your own ways when you're studying. You keep ways that when you're revising, you should be able to come back to things. पढ़ाई सोच समझ के करनी है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग है ना वीडियो बंद होने का बहुत फायदा उठा रहे हो, मुझे लग रहा है. यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, बात कर लेते हो, सब कर लेते हो, अब भूल जाते हो, मिस कर जाते हो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. तुम्हें पता ही नहीं होता क्या मिस किया, बिकॉज यू टेक इट फॉर ग्रांटेड. But remember, everything I say is important to you for your exams. Not even one word is not important apart from the bad jokes that I crack. That is just to make you smile. Ayush, what's on your mind? Sir, when we are changing from IFR to VFR, Carry on. when we are changing from IFR to VFR, then we give estimate. Then we say estimating TOD, top of descent. अगर डिसेंट मांगने वाले हो तो टीओडी आएगा. वेरी वेरी गुड थिंकिंग. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, अभी आप लोग ने किसी ने क्लाइम या डिसेंट का कॉल लिया था, मेक श्योर टॉप ऑफ क्लाइम एस्टिमेट, टाइम एस्टिमेट कि आप मैक्सिमम कब पहुंचोगे बोल रहे हो, एंड टॉप ऑफ डिसेंट कि डिसेंट कब स्टार्ट करने वाले हो. जनरली नेक्स्ट 5 मिनट्स फ्रॉम द टाइम यू रिक्वेस्ट डिसेंट बोलना जरूरी है यार. ऑफ कोर्स वहां पे तो पॉइंट्स गेन करोगे आप. आयुष, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, sir. Very good. Nukul, what's on your mind? Sir, suppose we are flying Chennai to Kolkata with Yankee flight rule, and at Vishakhapatnam we change over to VFR, and further we give the position report or any other things. So we mention that IFR from this to this, VFR from this to this. Still we stick to the Yankee, that Yankee Chennai to Bhubaneswar. एक ही चीज बोल रहे हैं, यांकी नहीं बोलना है. IFR flight level 330 to Khajuraho, thereafter VFR flight level 130 to Bhubaneswar. यांकी नहीं बोलना है, जुलू नहीं बोलना है. जहां तक IFR है वहां तक IFR, thereafter VFR बोलना है, या फिर जहां तक VFR है फिर IFR है, VFR so and so, thereafter IFR so and so. You don't say Zulu or Yankee. You just say IFR and VFR or VFR and IFR while explaining. Okay, sir. समझ रहे हो नुकुल? बोलो, कुछ बोल रहे थे बीच में आप. नो सर, नो सर, क्लियर हो गया. वो एक्चुअली
मैं वही यूज कर रहा था अभी तक कि अगर यांकी है तो यांकी चेन्नई टू कोलकाता और जुलू चेन्नई टू कोलकाता लाइक दिस. Very good question, actually. Everybody focus on this. Rohita, okay, she had a disconnection. Stand by. Victor Tango, Romeo Tango Alpha, Mumbai Control. How do you read? Radio 5 Victor Tango. Sorry, correction Mumbai ground. नहीं, आप मुंबई ग्राउंड हो क्या? कोई नहीं, बन सकते हो. Rohita, you had a disconnection. Nukul asked a very good question. Nukul, क्या पूछ रहे थे? एक बार क्वेश्चन पूछो. I'll just explain once more. Rohita, pay attention. Everybody, once more, please pay attention. नहीं तो ये confusion आती रहेगी आप लोगों को बार बार. Nukul, quickly ask the question again or Okay. share the point. Okay, sir. Sir, if I am flying from Chennai to Bhubaneswar and my flight rule is Yankee, and I suppose at Vishakhapatnam I have changed over to VFR. So I have further, if I contact to ATC for position report or something else, so I have to mention Yankee or I have to mention VFR from this to this. From I hope everybody has understood the situation. Gurpreet, Prerit, Rani, Gulshan, Muskan, Sridhar, Chavi, Rohita. So in this question, the answer is simple. जो अभी मैं मुस्कान को बता रहा था. Simply, you don't say Yankee or Zulu. You just say IFR till Khajurao, flight level 330. Thereafter, VFR to Bhubaneswar, flight level 130 in your position report. Don't say Yankee. Neither do you have to say Zulu. You will say IFR flight level this till this point. Thereafter VFR there. ये एक ही साथ आएगा. आप कहीं ना कहीं आपके position report में. You can do it initially before you give estimates, and after this you can start your estimates and ETM. Is that clear, everyone? affirm. Students, you can use emojis. आपको verbal भी नहीं देना है ताकि time fast हो जाए. मैं देख रहा हूँ सब कुछ screen पे. सब दिख रहे हैं मुझे. Emojis दिख रहे हैं सबके. Verbal दे रहे हो तो फटाफट verbal दे के, like if you are using a laptop or something, space bar temporarily दबाओगे तो unmute हो जाता है. Space bar is the way to do PTT in aviation that we do, push to talk. देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, but भूल जाते हैं हम because आदत. See, I pressed it, I can transmit. So you are on mute. Of course I was on mute. You need to be careful and we have to be on mute. But मैं भूल जाता हूँ ये PTT का चीज. But you can always try this, like this. Because you don't want to be on unmute otherwise because others get disturbed through background noise. तो आप लोग फटाफट बोल सकते हो रॉजर विक्टर टैंगो अल्फा में पापा. स्टाइल मारो हो रहा है ऐसे सब में. जो आपको इच्छा है करने की, जो आरटी में नहीं करने मिल रहा है, जैसे प्रोफेशनल पायलट्स बात करते हो, ये छोटी मोटी चीजों में आप ट्राई कर सकते हो. इतने अच्छे कॉल्स दे रहे हो उसके बाद आई विल नॉट से डोंट बी लाइक देम. अदरवाइज ऐसे डोंट डू व्हाट दे आर डूइंग इन रियल आरटी राइट नाउ. Because exams require you to be more thorough, more slow, and not be informal. Okay? Chalo. Anything else on your mind, students? Anybody wants to share anything? Let's get started with the mock. Think. Go through your notes. See if you have anything on your mind. Discuss. कुछ ना कुछ निकालना ही है दिमाग से. ऐसे सोच रहे हैं यार क्या है जो मुझे नहीं आ रहा है, पूछ लेते यार. Trouble your mind. By the way, tomorrow we'll meet at the same time for RT, okay? 10, you be ready. 10 भी आपको मॉक मिल सकता है, okay? तो आपको तो 9:45 से रेडी बैठना है और पढ़ना है, रिवीजन करना है. और एक बार अगर आप क्लास में ले लिया, so you have to practice those calls the way you have done. Amazing. But तो 2-3 लोगों ने करा है. कल दूसरे लोग करना पसंद करूंगा मैं सुनना for others. Like I would prefer नहीं करना ही है सबको, अगर आपको आगे बढ़ना है फटाफट तो. All stations. Mumbai Control 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? ये चीज किसी ने नहीं किया आज. और मैंने ऐसे ही इतना बड़ा लेक्चर दे दिया है. I am assuming we all have good readability.
तो मुझे कोई इशू नहीं है। अब मेच्योरिटी बढ़ रही है तुम्हारी मेरी तो अच्छा है, बट अगर नहीं बढ़ रही तो आपको रीडेबिलिटी करना ही करना है। अदरवाइज सर मैं यूट्यूब पे देख लूंगा, मैं नेटवर्क खराब है जब से आपने शुरू शुरू किया, आप तो चुप ही नहीं होते, मैं बोलूँ कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो रीडेबिलिटी चेक मत भूलो प्लीज। एक अच्छा काम कर रहे हो तो दूसरा बेसिक काम भूल जाओगे, देन यू आर नॉट रेडी फॉर द हेडलाइन। तो एग्जामिनर बोलेगा यार थोड़ा और पढ़ के आओ। I don't want to put you in the industry right now. RT examiners will feel like that because they determine the final thing that prevents you from getting a CPL, even if you have a CPL from another country. Nahi koi questions? So, if we are on taxiway and then our TCAS fail, then वो कॉल कैसे होगा फिर? तब तो हम RVS अनेबल RVSM तो नहीं बोल सकते, बस Students, टैक्सी बैक टू in एप्रन. yes, Rani, keep discussing. In your RVSM situations, abhi a point add kar lo. We have given you a few instruments or systems: altitude holding device, altitude alerting device. What are the other two? Mode Charlie, Mode Sierra transponder, altimeter redundancy. 4 हैं, एक और चीज ऐड कर लो, ACAS और TCAS should be operational. Anti collision avoidance system or traffic collision avoidance system. Traffic collision is advanced. It can also give you resolution advisory, as in what to do to avoid a potential conflict. There are 2 advisories. TA, traffic advisory, that will show you where is the traffic based upon your position, what is the direction, relative direction, what is the distance, whether the traffic is coming to you or going away from you. Small symbols, you need to study that. Small symbols on your primary flight display or navigation display in a glass cockpit. Other advisory that you get is called resolution advisory, RA. Resolution advisory means the system will tell you whether you should turn right or turn left, or whether you should climb or descend to avoid that traffic. TCAS gives you that. So in an RVSM situation where your proximity is less, you need to have this system so that if you're not aware, the system will warn you and you can just keep your separations at the safest possible levels. TCAS, if your TCAS is not working on the taxiway, now think, students think, okay? You don't always get a direct answer, but you start with what you have learned related to this. See with example what I'm doing right now. You get to the answer automatically and you're not giving dead air also. You get everything that you need, even though you don't need a direct answer, but you eventually get to the answer. How now? अभी इतना आपको समझाया मैंने, क्या करेंगे, क्या होगा, आरवीएसएम में टिकास इकास भी डालना है हमें, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज सर मैं तो रनवे या टैक्सी वे पे हूँ, मेरा टिकास खराब हो गया, अनेबल आरवीएसएम तो मैं नहीं बोल सकता, क्या करूंगा मैं? याद करो वो चीज, इफ योर एयरक्राफ्ट बिकम्स अनेबल आरवीएसएम और इफ योर एयरक्राफ्ट इज नेगेटिव आरवीएसएम, मींस इट डजंट हैव आरवीएसएम बिफोर डिपार्चर, it can still fly in RVSM airspace. All it has to do is mention negative RVSM at the end of the call before taking any request. तो यहाँ मैं बोल दूंगा सो एंड सो टावर और ग्राउंड जो भी है, रिक्वेस्ट टैक्सी और डिपार्चर whatever wherever you are for that flight level, aircraft negative RVSM due equipment. That's it. यहाँ enable नहीं बोलना है, negative RVSM बोलना है. If they don't give you RVSM airspace because of TCAS failure, they say no, we're not going to give you, no, it's risky. Then ask for non-RVSM flight level for your cruising altitude for climb on ground. तो ये कॉल का आंसर ऐसा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्योंकि हमने टिकास एक बार भी सॉल्व नहीं किया, हम डर जाते टिकास होगा तो क्या होगा. Then we connect the dots. That's why I tell you students, कोई भी क्वेश्चन है 5, 10, 15 सेकेंड दो, सोचो उससे कनेक्टेड क्या क्या आता है, आपको दिमाग चलाओ, अपने आप सोल्यूशन आ जाएगी तुमको. कोई जीनियस नहीं है जो ऐसे सोल्यूशन निकाल लेता है, सोचना पड़ता है. तो सोचो मुझे क्या आता है, कहाँ पे कनेक्ट है. आपको पता था, नहीं पता था टिक्कास एकास आएगा आरवीएसएम में, पता था, रानी न्यू इट कि सर अनेबल आरवीएसएम तो नहीं बोलूंगी, बट रानी हैज टू फर्दर कंटिन्यू कनेक्टिंग द डॉट्स कि ओके एयरक्राफ्ट अनेबल आरवीएसएम हो गया, बट मैंने टेक ऑफ नहीं लिया, मतलब एयरक्राफ्ट नेगेटिव आरवीएसएम, दैट इज द डिफरेंस. बिफोर डिपार्चर इफ यू डोंट हैव आरवीएसएम अप्रूवल, यू आर नेगेटिव आरवीएसएम. आफ्टर डिपार्चर, having RVSM approval, if something goes wrong, you become enable RVSM, then that is enable RVSM, request non RVSM flight level. तो उस टाइम पे हम सीधा नॉन आरवीएसएम मांगते हैं,
तो यहाँ पे भी हम हमारा क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड को चेंज करके नॉन आरवीएसएम मांग सकते हैं बिफोर डिपार्चर. लाइक क्या हो गई सिचुएशन में टैक्सी वे पे है, सो टेक एग्जांपल, माय फ्लाइट लेवल इज 330 मुंबई टू दिल्ली. आई एम ऑन टैक्सी वे, टिकास फेल्स, आई से मुंबई ग्राउंड, एयर इंडिया 123, taxi with Charlie for runway 27, aircraft negative RVSM due equipment, assigned cruising altitude flight level 330, due aircraft negative RVSM, request flight level 270, IFR Mumbai to Delhi, estimated time of departure 1400, passenger on board 180, information Bravo, security check clear. ये है इसका आंसर, परफेक्ट आंसर. दिया था मुझे फ्लाइट लेवल 330, मैंने खुद बोल दिया नेगेटिव आरवीएसएम टिकास, मैं फिर भी जाना चाहूंगी, मुझे तो 270 दे दो. क्यों 270? 330 इज ऑड, 270 इज द क्लोजेस्ट ऑड फ्लाइट लेवल दैट इज नॉन आरवीएसएम. 290 से स्टार्ट होता है, 290 आरवीएसएम है. 330 के ऊपर वाला आप मांग सकते हो 430, 410 भी आरवीएसएम है, 430, बट शायद आपको इतना ऊपर जाना नहीं है, आपको नीचे रहने का चॉइस है. वो नीचे वाला नहीं देंगे, 270 250 मांग लो, नहीं मिलेगा, देन यू गो टू 430. सो दैट वुड बी द रैली बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर इन दिस केस. थिंक, आंसर सब है हमारे पास, क्वेश्चन कुछ अलग आ जाता है तो हमें डर लग जाता है. इट मींस वी आर स्टिल मगिंग अप. सो वी टेल आवर माइंड अबे डोंट मग अप. थिंक, think till you find the best solution and it will come to you. Organic exam this is. Simulations are organic, students. Ananya, text me the full form of this abbreviation. Rani, tell me. Everyone soak it in. अभी जो सिखाया है, this is also gold. Yes, sir. Understood, sir. आंसर भी दिया है एंड कैसे आंसर खुद से लाना है वो भी दिया है. टू यूज योर लॉजिक, दोनों चीज आनी चाहिए. टेक 2 minutes एंड स्टडी एंड वर्क ऑन दिस एंड टॉक टू मी. सर कैसे करना है, वापस एक बार बताओ, मैं कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. इज इट इजी, इज इट डिफिकल्ट, आई हैव नेवर डन दिस, आई डोंट गेट इट, जो भी है शेयर करो. Yes, sir. This question came in the exam. So I said enable RVSM. Then examiner said no, no, no. Then he helped me. Then I said okay, taxi back to apron because टिकैस नहीं है तो मैं डिपार्चर कर ही नहीं सकती. ऐसा कुछ नहीं है. नेगेटिव आरवीएसएम जाओ, नॉन आरवीएसएम फ्लाइट लेवल मांग लो. यहाँ पे एक चीज मैं पिछले मास्टर क्लास में भी बोल रहा था, वापस जाने की क्यों घाई कर रहे हो, आपका काम है डेस्टिनेशन पे पहुंचना, यू ट्राई फॉर दैट. यहाँ पे वो लॉजिकल रीजनिंग आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस टैक्सी पे, वापस एप्रन का है, वापस स्टार्टअप का है, नहीं है तो फिर आप क्यों जा रहे हो वापस. लॉजिक मेंटेन करो ना, आप डर क्यों रहे हो उस चीज से, इतना डर क्यों है कि मेरा एक सिस्टम खराब हो गया मैं जा रहा हूँ. आरवीएसएम सिस्टम्स नहीं भी है, नॉन आरवीएसएम में अप्लाई कर सकते हो. नॉन आरवीएसएम क्या है, एनीथिंग आउटसाइड फ्लाइट लेवल 290 एंड फ्लाइट लेवल 410. और तो और आप आरवीएसएम में भी फ्लाई कर सकते हो, एयरक्राफ्ट नेगेटिव आरवीएसएम बोल के और रिक्वेस्ट करके. मिल गया तो मिल गया, ट्रांसपॉन्डर तो है ही आपके पास, एटीसी तो चेक करेगा ही आपको, तो वापस क्यों जाना है. बट गोइंग बैक इज ऑल्सो अ सेफ ऑप्शन. सो रानी आई विल से, अरे पायलट मेरा बहुत स्मार्ट है कि डिडंट रिस्क, बट एज पर रूल्स टिकास नहीं भी है, आप जा सकते हो नॉन आरवीएसएम. ऐसा पॉइंट है यहाँ पे अजम्पशन इस कॉल में, ताकि यू कैन कंटिन्यू. हाउ विल यू मैनेज, एंड ये आरवीएसएम में हमने पढ़ा है, बस टिकास का लिंक नहीं था, वो ऐड कर दो और इसको 5 मिनट स्टडी करो सब लोग. रानी आपने वैसे तो हैंडल सही किया, बट अब समझ लो क्या करना चाहिए था हमें. अफम सर. करो इसको स्टडी अच्छे से, एंड प्लीज वापस एप्रन पे जाने की घाई मत क्या करो, अनलेस आपको कोई रूड पैसेंजर को ऑफलोड करना है या कोई सिक पैसेंजर को आपको डॉक्टर को दिखाना है, या माल फंक्शन है कि आपको वहां जाना पड़ रहा है वापस, है ना. बड़ा माल फंक्शन, स्ट्रक्चरल डैमेज, इंजन फेलियर, फ्यूल लीकेज, वो सब में भी आप रुक जाओगे उस जगह पे, कहीं जाओगे नहीं वापस. सिर्फ रूड पैसेंजर ऑफलोड करना है, वायलेंट पैसेंजर ऑफलोड करना है, बॉम्ब डिस्पोजल के लिए आपको टैक्सी करनी है अचानक से कहीं, हाई पावर रनअप के लिए कहीं जाना है, वहीं बस मूवमेंट्स करोगे, अदरवाइज विल जस्ट कंटिन्यू गोइंग. लाइन पे लगे रहो और जाओ, ट्राई करो. यार मेरे एटीसी मेरा टिकास नहीं चल रहा है, मैं जा सकता हूँ क्या, तुम्हारा इंटेंट ये होना चाहिए. तो मेरा आरवीएसएम तो है नहीं, तुम मेरे को नॉन आरवीएसएम दे दो,
सेफ रहेगा, ठीक है, ये लॉजिकल है। अच्छा, आप नहीं जाने दोगे, मैं बात करता हूँ किसी से, यार आई कैन फ्लाई, टिकट्स नहीं है, क्या हो गया, क्या करे क्या करे क्या नहीं करे, फटाफट कर लो, हाँ ठीक है आप जाओ, प्रिकॉशन के साथ जाओ, ठीक है। नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते और क्या क्या रीजंस है, ठीक है, कैंसल डिपार्चर। देन आपको एग्जाम में कैंसल डिपार्चर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, फिर आरटी कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आपको कंटिन्यूएशन ही देंगे, छोटी छोटी सिचुएशन देंगे जो आपको टैकल करनी है, ये सीक्रेट है छोटा सा, तो आप क्यों डर रहे हो? इतना भी रियलिस्टिक मत चले जाओ आप, बट या इट इज ऑल रियलिस्टिक ओनली। थिंक स्टूडेंट्स, थिंक, एवरीथिंग इज विथ यू, जस्ट मेक योर माइंड थिंक। रानी समझ आ रहा है? Yes, sir. सीखो सीखो। अनन्या, MCAS, it's not an approved system. This has caused 2 accidents with a leading manufacturer. Please दिमाग से निकाल दो, कोई नहीं पूछना है आपको, कोई पूछेगा बोलोगे सर आईकाउ ने नहीं पढ़ा है मुझे। समझ रहे हो? दिस इज समथिंग, दिस इज अ बिग, I don't want to talk about it because our videos are open for everyone. Ignore this, forget this. This is not something you need to study. This is not something that is approved. Okay? Affirm. I'll share this personal thing. I watched there are 2 documentaries on this issue. I watched the first one when the first one came in. And students, I know everything about aviation, okay? As much as I can know, I know. I was watching, okay. And whenever I hear about crashes, I think how it could have been prevented. It's inbuilt in our training. Okay. The first doc is very good. Suddenly they spoke about MCAS. I woke up. I was watching it late night. I woke up. MCAS. And I was beating myself up that, Alkesh, आपको कैसे नहीं पता ये? And I felt so bad. मुझे कैसे नहीं पता ये कब आया? Shit. Sorry. But yeah, I felt like that. I'm like, something is wrong. Instinctively, I realized something is wrong, and instinctively, I knew this is not something that exists. And then, as the documentary continued, I realized my instinct was right. That it is not a system, but a multi-billion-dollar company pretends that it's a system just to get rapid approvals so that they can get more profit. In aviation, you cannot apply those laws of businesses. People don't know that. New CEOs don't know that. So my instinct there and then was right, because it is nothing. It is not approved. It is a flaw. It is cheating. So yeah, students, be very careful. Okay. Your knowledge will get you places in aviation. It's no joke. If you study well, nobody can shake your fundamentals. Nobody can. It's universal knowledge. And this knowledge has been coming since a long time. कुछ नया नहीं है aviation में. कुछ भी नया नहीं है. नई चीज आने में 20 साल 25 साल लगते हैं एविएशन में. ऐसे तुरंत नहीं आती चीजें. तुरंत आ गई मतलब आप दूर रहो उस चीज से. So yeah, let's take it. Let's take a 5-minute breather. 11:45, about 11:45, you will be getting the email, question paper, and we'll start. Okay, Muskan, be on the standby. 11:45, everybody collect. आप लेट आए तो आप मिस कर जाओगे. Muskan, you don't be late, okay? 11:45, everyone. 7 minutes.
Okay, I hope everyone is back. Muskan? Affirm Bani? Victor Tango Mike Sierra Lima. आ गए सब लोग? Affirm Victor Tango Golf Romeo Papa. From Victor Tango Oscar Mike Golf. बहुत स्लो रिप्लाई कर रहे हो. Verbal reply बहुत slow आ रहे हैं, but I appreciate at least some people are doing it. So I was not looking at the screen, so I was expecting verbal reply. So no problem, it's fine. Just give me a second. I'm just giving you the question paper. Okay, check your emails. Refresh, refresh, refresh. We all will be blind. I'll be blind. I'll be writing everything. I'll be assessing it also. You'll also have to write it. Student giving the mock will have to give me the answer sheet as a reply to the email that you'll be getting. Everybody else will be sending me a study notes at the end of the lecture as a part 2, as a PDF, of course, and name it properly. L4 J23, and before that your name. Like Ayush L4 J23. इतना बस JPEG to PDF फटाफट करके भेज के रखो आप लोग. 1 second. नहीं आया होगा ना अभी तक. Wait, okay. Attachment. 1 second, I'm cross-checking. And question paper reference number is very easy. J23 RTQ2. Simple for now. तो अपने notes में लिख दो. And remember to use the same chart given to you at the end. Okay. Okay. Email has been delivered from here. Muskan, the moment you receive it, I'll tell you, start transmitting. That's when your 25 minutes will start. Take your time, do well. Remember, don't rush. And this is just practice. This is not exam. So don't worry. Check, 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 check. Everybody got the question paper? Make a collection of these question papers also in your folder, file folders. I hope the readability is good. आ गया मुस्कान. Affirm sir, it's opening. Please wait. Stand by. ऐसे नहीं चलेगा ना. 25 मिनट स्टार्ट हो रहा है. इतना टाइम नहीं लगता है. अब तो एक्स्ट्रा मिनट ले लोगे. अब एग्जाम में नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा मिनट. मिला कि नहीं मिला? जल्दी बोलो. Negative, कंफर्म. sir, I'm negative, sir. It's not opening actually. I'm sharing you a screenshot. Wait. नहीं आप डाउनलोड कर लो. स्क्रीनशॉट इंशॉट नहीं. आई बिलीव यू. आई बिलीव माय स्टूडेंट्स. प्रूफ नहीं चाहिए मुझे. मैं तो बस बोल रहा हूँ. मुझे लगा मिल गया है आपको. आई वाज जस्ट नहीं सर, किडिंग विद यू. डाउनलोड ही नहीं हो रहा है.
रिफ्रेश करो डेटा। डेटा जस्ट एयरप्लेन मोड पे डाल के ऑन ऑफ कर दो ना, बस हो जाएगा। नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बैकअप के लिए व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और बाकी सबको मिल गया? Affirm Victor Tango Alpha Yankee. From Victor Tango Oscar Mike Golf. जिसको नहीं मिला वो बस बोल दो नेगेटिव, बाकी मैं समझ जाऊंगा। रिमेंबर, इन ऑर्डर टू मेक अफर्मेशंस क्विक, जो अफर्मेशन नहीं एक्नॉलेजमेंट्स क्विक, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, सर तो मिल ओनली गया एक्सपेक्ट दो स्टूडेंट्स जो बोलेंगे मुझे नहीं आ रहा है। या मुस्कान? सर, got the message sir. Your time starts now. You can start transmitting. Imagine I'm the examiner sitting behind you. You are ahead, 2 desks. The room is full of at least 6 to 7 such examiners seated with 6 to 7 such individuals. It's noisy. You are stressed, but now you have been given the headset, the stationery and everything. The headsets are wired headsets. You don't have PTT. So stay on unmute all the time. Time starts now. You can start transmitting. स्टूडेंट्स, TBA 7 इग्नोर करो, वो पुराना रेफरेंस नंबर है, वो पर्सनल रीजंस के लिए रखा है सिर्फ, ठीक है? एंड चार्ट वो यूज करोगे जो दिया है पेपर में आपको, इस मॉक के लिए सिर्फ। Patna Tower, SpiceJet 772 on 118.3, stand 2, IFR Patna to Silchar, security check cleared, information Bravo, passengers on board 120, Boeing 737, request startup for flight level 350. SpiceJet 772 Patna Tower, startup not approved, confirm destination. Startup not approved. Destination Silkar, SpiceJet 772.
SpiceJet 772, Patna Tower. As per flight plan and FIC, you are not cleared for Silchar. Report intention. As per flight plan and FIC, not cleared for Silchar. Stand by. SpiceJet 772. Standing by. Patna Tower. Patna Tower. SpiceJet 772. Unable to determine destination. Go to next question. What is VEGT? What is the route? Can you not track Patna and route and find what VEGT stands for? Have you not done chart reading? What is VGT? What is the VE? V Indian FSRA, E is Kolkata FIR, GT. Generally, the last two words will be synonym to the either the way the place sounds or the VOR code. GT, what could be GT? Which area is it? Track Patna Whiskey Guwahati. 45. So why not do it by yourself? Sorry, Technique diya sir. hai I na? No sorry. There is no mistakenly sorry in RT. Exam is gave going you on. a This is sir, your I examiner talking to you. Go to the next question. Do it fast. Patna Tower. SpiceJet 772 on 118.3 holding short runway 32. Another aircraft has given clearance before me. Request reason. SpiceJet 772, Patna Tower, traffic, flight level 370,
Traffic flight level 370. Roger. SpiceJet 772. Roger. Patna Tower. Patna Tower. SpiceJet 772 on 118.3, holding short runway 32, cleared of traffic, request enter runway 32, request takeoff clearance. Go to next question. Why are you not reading other information? Be careful. Patna Tower, SpiceJet 772 on 118.3 on takeoff leg, runway 32, passing 3500 feet for flight level 70. See a flock of birds ahead, turning left for 15 degrees to avoid birds. Roger. Patna Tower. Go to next question. Mayday, Mayday, Mayday. Patna Tower, SpiceJet 772 on 118.3, Whiskey 4530 DME, outbound Patna, flight level 350, hit by birds, controls affected, Patna Tower, SpiceJet 772, disregard.
Mayday, Mayday, Mayday. Patna Tower. SpiceJet 772 on 118.3. Flight level 70. IFR Patna to Guwahati. Hit by birds. Controls affected during initial climb. Would like to return to Patna. Overweight landing not possible. Request further instructions. Passengers on board 120. Boeing 737. Go to next question. Patna Tower. SpiceJet 772 on 118.3. Controls are back to normal. Would like to proceed as per flight plan. IFR Patna to Guwahati. Boeing 737. Passing flight level 90 for flight level 350. Estimating Nirab 0060. Bhagroda zero zero correction 001. Go to next question. Pan 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 pan. Bhagodra Tower on 119.7.
SpiceJet 772 over Opimo Whiskey 45 radial 017 20 DME outbound Opimo slow correction experiencing slow decrease in cabin pressure. Request further instructions. Go to next question. Bagodra Tower SpiceJet 772 on 119.7 cabin pressure back to normalize flight level 350 30 DME outbound Opimo would like to proceed as per flight plan. Go to next question. Estimating question number 5 alpha wireless planning and coordination wing is formed by International Telecommunication Union. Go to next question. This NOTAM replaces previous NOTAM. Go to next question. International Civil Aviation Organization has headquarters at Montreal, Canada. Go to next question. Controller, pilot, data link, communication.
Go to next question. Aerodrome, signal, area is the area on an aerodrome used for the display of ground signals. Okay. Get click pictures, convert PDF, rename, and reply as an email. Reply or send it as a reply to the same email on which you got the question paper. Take your time. Once done, let me know. So in this situation, we'll assume that once the paper is submitted, you're asked to go back to the waiting room. So you all will feel that, okay, now you're done finally with what you have been waiting for. And you're just in the waiting room, waiting for results to be announced, whether you're cleared for part 2 or not. Just give me a second, okay. I'm off the table. Just send it and wait for me. Don't go anyone. Muskan, did you send? Sir, please stand by. I'm scanning. Okay. Standing by.
सर हम्म सर मेरा फोन हैंग हो गया है, मैं व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर सकती हूँ? बाद में ईमेल पे भी भेज देना। ओके। Atharva is not there in class, right? सर हम्म सर मेरा फोन अभी तक हैंग ही है। हम्म आई सेंड यू एसएप, आप हम्म। वाइवा कर लो। आपको जो काम दिया वो पूरा करो, फिर ही वाइवा होगा। ओके। अफर्म विक्टर टैंगो माइक सियरा लिमा। हम्म Only Sridhar remembers to message his exam date regularly. Others don't remember. I've told you all that every day, whoever is doing Mumbai has to give me your exam dates. It's okay. I mean, for, it's okay. I mean, I have it noted, but क्या डेली वो मेमोरी में याद रहता है ना। ओके ऑलराइट। Muskan done sending all pages? Affirm. After the lecture, sir, I will send you on email. Yeah, sure. Due Don't to worry about it. due to storage problem, sir. It's okay. Don't worry. काम हो गया ना बस. It's okay. Don't worry. Okay. Please make arrangements. We'll do your part 2. So I would want you to be face to face. I gave you all techniques how you can do that, maintaining privacy. Students, you can wear masks or anything, stole, scarf, whatever. I don't mind.
You need to see your body language and you need to feel that you're facing someone. So please, whenever you're ready, do that, Muskan. And remember the rules. You'll knock, push the door. If the door is closed, you'll ask for permission. Sir, madam, you just scan the area, see how many people are there. Be aware. You tell them, sir, ma'am, may I come in? They'll tell you where to go. There might be two different people sitting on two different desks, probably 2 or 3 people sitting on the same desk. If they ask you to go to some place, you say, sir, good morning, good afternoon, good evening. May I have a seat? Build some good rapport. Very nice to meet you all, sir, or thank you for having me, or I hope everyone is doing well. Something or the other, whatever you feel comfortable with. Settle down. Don't be stressed. Don't be afraid. This is your place. You have trained well. If you perform well, they'll be happy to have you. You are happy to have them. Simple as that. They are not your seniors, they are your equals, is how you're going to think. But you show them respect as if they are your seniors. Obviously, they are your seniors. After that, you'll start your mock. So remember this, everyone. This is an important part of the strategy to build a very good impression so that you get in the assistance from them if you get stuck somewhere, and get also the benefit of doubt if things go wrong. Okay. So, Muskan, you're entering the room. Go ahead. All stations, how do you read? Muskan, how do you read? All stations, Mumbai Control, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Read U5, Victor Tango Alpha Yankee Uniform. Read U5, Victor Tango Golf Romeo Papa. Muskan, how do you read? You're on mute. दो बार पूछ रहा हूँ. Read U5, Victor Tango Mike Sierra Lima. तो अभी आपको बोला है, आप जिस रूम में एंटर किया है आपने, क्या करोगे आप? कैसे? Till the time you are seated. Now imagine you have entered the room and just. I asked permission 3 times to. But I want to. Karo, this is your viva. Karo. May I come in, Karo sir? jo bola hai. Yes, yes, please come in. May I have a seat? Yes, of course, please sit. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Thank you for having me. Very good. Good afternoon. So you are Muskan, right? Yes, sir. Okay, Muskan, tell us something about yourself. My name is Muskan Lokhande from Mahat, Maharashtra. I have done my graduation in physics and currently I'm doing my CPL studies. After this, I'll go for flying. Carry on. So you are doing your CPL studies. After this, you'll go for flying. You're from Maharashtra. What else, Muskan? I have done my graduation in BSc Physics. BSc Physics. Okay. From Mumbai University. Okay. What else? After this exam, I'll be preparing for DGCA papers. Okay. Why do you want to do RT and why do you want to do your papers? To fulfill my dreams, sir, to be a pilot. Not to just a pilot, but a captain, a successful captain. Okay. So how will RT help you in realizing your dream? RT, it stands for radio telephony. It's a language, as we can see that every different language are spoken in different countries.
So to make a single correction, to make one language so that it will be easy for understanding to the controllers, air traffic controllers. So the RT is made. Who issues this RT license? WPC, that is Wireless Planning and Coordination Wing. It's a wing of Department of Telecommunication, which is working under Ministry of Communication. It is established on 1952. Okay. What did you say about International Telecommunications Union? Did you say that? Did you say communication? Can you say again? You were too fast. What is the RT phrase to be used when someone is speaking too fast? Speak slower. What other phrases are you aware about? Affirm, meaning yes. Negative, meaning no. Then cancel, that means annul my previous message. Then break, if we have interference in our communication, and if we are doing in very busy environment and many aircrafts are transmitting, then we have to say break. If we want to say again something, we say simply say again. If we want someone else to do this, so we say that say again all, or the specific part which is not heard due to the interference. What do you mean by the phrase correction? Correction means there was a mistake in my communication, a little mistake. So I'm correcting it. Okay. So if you are carrying human organ transplant and you have departure, but you're not getting clearance, what are you ideally supposed to do? I'll ask departure on priority as human organ is on board. And as you and me know that human organs, after the operation, it will last for few hours. Are you also a medical student? Negative, sir. Okay, so how do you know that? It's a general knowledge. How do you cancel an urgency or a distress call that you have made when the situation has come back to normal? By saying cancel pan and continue the call as per normal. What do you mean? Continue the call as per normal? That means we have to call the appropriate tower, then our call sign, then the situation we are suffering, then we are now normalized from that situation. Can you give me an example? A live Sure, call? sir. Okay. Patna Tower, SpiceJet 772 on 118.3. Cancel pan. Hydraulics back to normal. Request to proceed as per flight plan. IFR Patna to Guwahati. Radial 017. 30 DME outbound. Estimating Alpha 0530. Bravo 0540. ETA Guwahati 0600. What do you understand by ICAO Annexure 10 and Annexure 15? The ICAO Annexure 10, it is for aeronautical telecommunication. It is subdivided into 5 volumes. Volume 1 is radio navigation aid. Volume 2 is for radio correction communication procedures. Then volume number 3 is for radio correction.
communication systems, the volume third is further divided into two parts. Part 1 is digital data communication system. Then part 2 is voice communication system. Volume 4 is for surveillance radar and collision avoidance system. And volume 5th is for the frequency, aeronautical radio frequency spectrum utilization. The NHA volume 3 further contain ELT, that is emergency locator transmitter. Then AFTN, aeronautical telecommunication fixed network. Aeronautical fixed telecommunication network. ATN, that is aeronautical telecommunication network. And cell call, that is for selective calling. VHF, that is very high frequency. And NHL 15 is for aeronautical information service. It includes the following, such as aeronautical information publication. It has further amendments and supplements. Then AIC, that is aeronautical information circulars. And then NOTAM, that is notice to airmen. And PIB, that is pre-flight information bulletins. Very good. Okay. Thank you. You can go to the next, sir. Thank you, sir. Thank you for having me. You're welcome. Good afternoon, sir. May I have a seat, please? Yes, sure. So, Muskan, tell me quickly, what do you understand by radio wave propagation? Radio wave propagation is basically the form of or a path through which the radio wave travels. There are different types of propagation: sky wave propagation, ground wave propagation, which is also known as surface wave propagation, and sky wave propagation, also known as ionospheric propagation. Then there is space wave propagation, which is further divided into two parts, that is line of sight propagation and ground reflected wave propagation. So where do we use skywave and where do we use the space wave? Yes, skywave is used for mainly HF frequency, which have frequency band of 3230 megahertz, and the space waves are used for the VHF, then SHF, UHF, SHF, and EHF. What's the difference between skywave and space wave? Skywave is the wave which propagates through the ionization sphere. And the space wave, it follows the line of sight. That means as long as we can see, we transmit. And some waves, they are reflected from the ground and then reach to the aircraft, and then aircraft receive the signal. But still, what's the major difference between the applications? Propagation is fine, frequency bandwidth is fine, but what is the main difference? Why do we use HF for skywave and direct wave for the other higher wavelengths, higher frequency ranges? We use the HF as a skywave propagation in order to give the long range communications, and it is dependent on the wavelength, frequencies, and also the atmospheric constituents. And we use the line of sight propagation. It is for short range only. They are not much disturbed by the atmospheric constituents. Okay. All right. So you said HF skywave for long wave communication, long range communication. What if I want to use radio waves for long range navigation? Which frequencies do I use and which systems do exist? Long range navigation. Which frequency band and which system? Okay. For long range navigation, we have very old system known as LORAN. LORAN stands for long range navigation. It helps the aircraft to know their position by tuning to a low frequency. Basically, it is a system of ground-based equipment, and the different stations, they form a chain. One of them is a master station, and others are secondary. Okay. What about other systems
don't talk, Loran, forget it. Something that is still in use. Sir, What I'm are the unable radio to. navigation systems that you use today? Okay. Radio navigation systems. We use ADF. ADF stands for Automatic Direction Finder. Then VDF, that is Very High Frequency Direction Finder. And we have VOR, that is Very High Frequency Omnidirectional Ranging. Then we use So ADF, what frequency band do we have ADF, and what would you think about ADF? Can this be used for long range navigation? Negative, sir, it can't. And it has frequency, it uses a frequency of 190 kilohertz to 1750 kilohertz. So do you think this frequency cannot be used for long range? What if we compare it with VOR frequencies for navigation? Which will give me more range, ADF or VOR? ADF, sir. But you said ADF cannot be used for long range navigation. Sorry, I give the wrong answer. Disregard for that. So what is your correct answer? ADF can be used for long range communications. Compared to VOR. VOR, okay. How would As you compared explain this relationship between long range at lower higher frequency? What's the basic determining factor that determines range will be long or less? So it is dependent on the frequency and wavelength. The relationship between the frequency and wavelength is simple, that is, they are inversely proportional to each other. And as the frequency is high, wavelength is low. And as the wavelength is low, we cannot have the longer range, but we have more clarity. And in case we have low frequency, we have higher wavelengths and higher ranges, but we get less clarity. Okay. Do you know any propagation errors for any of the waves? Yes, sir. Mention anyone. Propagation, attenuation, fading. What is attenuation? Describe anyone. Okay. Attenuation is basically a loss of signal strength between the networking cables. Cable. What for? Wireless radio. In wireless also, sir. Attenuation has two factors. First is absorption. There are so many constituents in the atmosphere, and due to that, the energy of the EM wave, it is scattered. Second is inverse square law. Inverse square law is basically, if we want to travel a double distance, we have to increase the range by correction. We have to increase the power by 4. Okay. One last question. What do you understand by modulation? Modulation is a process of superimposing an modulating signal on a carrier wave. In simple words, we can say that modulation is a modulating on carrier wave on modulating signal, or modulating signal on carrier wave? Modulating a signal on carrier wave. No, I don't understand what that means. Can you rephrase? So I explain you in simple words. Modulation is basically a process of converting the data into energy form. No, that is not what modulation is. Sir, I have studied, but I'm unable to recollect it. We will not allow you, if you don't give this answer, to leave. I'll tell you something which I know about modulation. There are different types of modulation. Keyed modulation. Keyed modulation is basically
we interrupt the device to get a shot, that is a dash, for short time, and for long time to get a dash. But why do we need modulation? In order to transmit a message, we need modulation. How do we do it? You were saying something about superimposing. What was it? So, when we use a carrier wave for a radio frequency, it is unable to contain more information. So, in order to transmit any speech or any data, we have to superimpose on another wave on the carrier wave, so that our transmission will be completed. Okay, fine. Thank you. You can go. Thank you so much, sir. Thank you for having me. Most welcome. So I know Muskan is involved. Baki log, I'm hoping you're doing what you've been asked to do. I hope you're all involved. Very soon it can be you. It has to be, right? Okay, Muskan, how was the experience? Part 1, talk about it. मुस्कान को गो बोला, मुस्कान घर ही चली गई। अरे मेरा एग्जाम हो गया, मैं थोड़ी देर जाके सो रही हूँ, रिजल्ट आएगा, टाइम है, तब तक स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ में। मुस्कान you're on mute, okay? Mumbai Tower, read you to say again all. Yeah. Please share your experience. नुकुल इतना जोर से मत हंसो, सब हंसेंगे तुम पे। म्यूट पे नहीं होता। Sir, I have network problem. Sorry. अनम्यूट कैसे हो गया? I didn't hear अनम्यूट anything. कैसे होगा पूछ रहा है भाई। भाई कभी तुम्हारा Amazon Alexa चल जाता है, कभी ये चल जाता है क्या? भाई वो तो आयुष का चल रहा था उस दिन। नहीं नुकुल तुम्हारा ही चल रहा था शायद, दोनों का चल रहा था शायद। नहीं मुस्कान, I was asking you, how was the experience? Talk about it. Part 1 especially. सर मैंने बताया मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, सॉरी। आई से अगेन। मैं कहाँ है नेटवर्क प्रॉब्लम बताओ, मैं जाके पता करता हूँ, या दोबारा बोल दो, दोनों में से एक ऑप्शन है। हाँ दोबारा बोल रही हूँ। आई से अगेन, द एक्सपीरियंस वाज गुड। आई नो माय मिस्टेक्स। आई वाज इन अ हरी टू रीड अ फ्लाइट प्लान एक्चुअली, but in next mock I'm sure I will not do this mistake. What mistakes are you talking Sorry, about? sir. For example, in question number 3 alpha, I didn't read the initial climb and I mentioned the wrong flight level. Okay. I disregard there. Then in question number 3, Bravo, I think I must ask for sector flying. Not sure. Then I think mistake is in question number 4, B2. The alternate aerodrome, I read that aerodrome as arrival. B2? The big, very big कहाँ पे mistake. ये B2? Which one? Question number 4 alpha or question number 4 bravo? What are you talking about? No, I'm talking about the destination aerodrome right now. Which question number you're talking about? Question number 1, alpha. 1, alpha. Okay. So yeah, why did this happen? Guwahati, you have list of location designators also, like, so you think that was a mistake, question number 1. Okay, carry on. Okay. Sir, I don't know only this. आपको एग्जामिनर ने
बताया आप अदर इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हो, आपने उसको फिर भी नहीं पढ़ा? यस क्या है सर। वहां पे? क्या करना चाहिए था ह्यूमन उसका और ऑर्गन। कहाँ करना चाहिए था? जो क्वेश्चन नंबर 1 ब्रेवो है ना, जहाँ पे वो उसने अनदर फ्लाइट टुक ऑफ अर्लियर देन अस, वहां पे यूज होना चाहिए था कि मुझे प्रायोरिटी डिपार्चर चाहिए। स्टार्टअप कॉल में क्यों नहीं मेंशन किया प्रायोरिटी डिपार्चर चाहिए? सॉरी सर, मुझे क्लिक ही नहीं हुआ। क्यों क्लिक नहीं हुआ? मे बी आई वॉज नर्वस सर। यू डिडंट साउंड नर्वस दो। नो, बट सर आई एम नर्वस। अच्छा है ना, ट्रेनिंग सिखाया है वही कर रहे हो, आप नर्वस हो बट दिखा नहीं रहे हो, सो आई एम हैप्पी यू आर फॉलोइंग द ट्रेनिंग। फर्स्ट कॉल में क्यों नहीं लिया प्रायोरिटी? स्किप हो गया, या पढ़ के भी याद नहीं आया, या याद करने की कोशिश नहीं की? क्या लग रहा है आपको? या सिंपली इग्नोरेंस है, या अदर इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं गया, क्या हुआ? नहीं सर, मेरा अदर इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ही नहीं गया और मुझे क्लिक ही नहीं हुआ वो। बट स्टार्टअप कॉल्स आर वन ऑफ द फर्स्ट कॉल्स दैट वी डू, जहाँ पे हम प्रायोरिटी भी डिस्कस करते हैं। तो क्या वहाँ का रिवीजन, क्योंकि वो फर्स्ट थिंग है रिवीजन की, हो सकता है आप भूल गए हो, ऐसा कुछ है? या रिवीजन में कुछ कमी है हमारे, क्या कुछ बताओ मुझे। यहाँ 10 on 10 मिलना चाहिए हमें। अब हम प्रायोरिटी नहीं मेंशन करेंगे तो सीधा 5 पे आ जाएंगे हम लोग। सिंपल कॉल है, सर प्रायोरिटी एक्चुअली दिस बोलनी वाज है। माय सेकेंड लाइव कॉल। ठीक है, बिगिनर्स मिस्टेक है, सो वी कैन कवर अप, बट आगे का क्या प्लान है? हाउ विल यू कवर अप? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सर आई नहीं। प्रैक्टिस मोर, इट वोंट हैपन अगेन। ओके, हो भी गया तो क्या, आई एम नॉट गोना पनिश यू। ठीक है। ये गुवाहाटी सिलचार वाली क्या कंफ्यूजन क्या थी, क्यों नहीं समझ आ रहा था? स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर्ड इन द एग्जाम, कभी भी नया चार्ट आ सकता है। ठीक है, आपको टेक्निक दिखाई है तो आप खुद से गुवाहाटी सिलचार क्यों नहीं कंफर्म कर रहे थे? आपको फर्स्ट कॉल में एग्जामिनर इतना बोल रहा है सिलचार नहीं जाना है, सिलचार नहीं जाना है, सिलचार नहीं जाना है। क्या चल रहा था दिमाग में? समझ क्यों नहीं आया कि क्लिक क्या नहीं हो रहा है? वहां पे क्या चल रहा था? I considered the alternate aerodrome as the arrival aerodrome. So at the end there were KU, this kilo uniform. So I think it is Silchar. आपके पास लोकेशन डेजिग्नेटर्स है ना स्टूडेंट्स? मुस्कान है ना तुम्हारे पास? मैंने Affirm भेजा है, sir. चेक करो। कोलकाता एफआईआर चेक करो, सिलचार का क्या है और गुवाहाटी का क्या है, कितना टाइम लगता है? अभी तो कर लो चेक, क्या है केकेयू भी सिलचार है कि नहीं है, चेक तो कर लो सिलचार का क्या है, केकेयू क्या है। एवरीबडी डू इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फ्लाइट प्लान पे क्या ट्रैक करनी है स्टूडेंट्स? डिपार्चर, डेस्टिनेशन, कॉल साइन, रूट, फ्लाइट लेवल, फ्लाइट रूल्स। डिपार्चर डेस्टिनेशन सबसे पहले, रूट ट्रैकिंग सबसे पहले, तो गलत कैसे हो सकता है? ऑल्टरनेट यहाँ है, डिपार्चर अराइवल एक दूसरे के ऊपर नीचे ही तो है, तो वो गलती कैसे हो सकती है हमसे? वो फर्स्ट क्वेश्चन में हम गलती करेंगे, एग्जामिनर अगर हेल्पफुल नहीं है तो पूरा पेपर हमारा खराब हो जाएगा, पूरा पेपर। बिकॉज वो नहीं हेल्प करेगा या करेगी एग्जामिनर, तो सिलचार सिलचार सिलचार, आपको कोई आधे आधे ही मार्क्स मिलेंगे जो आपके कॉल पे मिल रहे हैं, आपको क्वालिटी पे, टेक्निकल इश्यू पे हो रहे हैं वो फिर आधे मार्क्स चले जाएंगे। पहले कॉल में तो हमें एक मिस्टेक नहीं करनी है, जबकि पहले कॉल पे ही मिस्टेक के चांसेस ज्यादा है जब हम पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं। हम हमारे दिमाग से निकाल देना है कि मैं पहली बार दूसरी बार कर रहे हैं, बिकॉज क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है, हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम पहली बार में करके भी पास होते हैं। आप लोग इतने लकी हो गए, आपको इतना मौक मिल रहा है, भाई कोई नहीं देता इतने मौक, इतने ऑर्गेनिक, इतने रियलिस्टिक। अब मुझे तो कभी नहीं मिले मौक, मेरा तो पहला मौक मेरी एग्जाम थी। कितने बच्चों करते हैं यार? सब करते हैं, कितने पास होते हैं? तो आपको अलर्ट रहना है। ये तो ऐसी बात हो गई स्टूडेंट्स की, सर मेरा तो पहला फ्लाइट है, मैं तो पक्का क्रैश करूंगा। अरे
ऐसा थोड़ी होता है, पहली फ्लाइट किसी की क्रैश नहीं होती, हर कोई पहली बार फ्लाई करता है। तो यहाँ क्यों हम इतने मिस्टेक्स करेंगे, ये तो और भी इजी है ना उससे। इट्स जस्ट कि चल मैं यहाँ एग्जाम में बैठा हूँ, डेस्क पे बैठा हूँ, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ क्योंकि किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ज्यादा से ज्यादा मेरा एक सेशन जाएगा। एयरक्राफ्ट में मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरी लाइफ जा सकती है। तो वहां आपका दिमाग अपने आप सब कुछ करता है, तो यहाँ क्यों नहीं, कि सिमुलेशन तो सेम है ना। अभी मुस्कान आपका कॉल इतना अच्छा है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट मॉक, excellent, one of the best mocks that I've seen. Excellent call quality, excellent use of training, everything I could see that मैंने जो जो सिखाया है वो सब कर रही है. Part 2 excellent, the way you handled. Couple of words I would want you to not use, couple of things not use. सोचो वो लेवल पे होगे तुम कुछ एक्स्ट्रा कर रही हो उसकी जरूरत नहीं है. Excellent. Part 1 confidence things excellent. सब बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया. सिली मिस्टेक्स ड्यू टू इग्नोरेंस हो रही हैं बस, जो हमेशा होती है बिगिनिंग में, बट अब दूसरे मॉक में तुम्हें जरूरत ही नहीं हो सब करने की, जो होगी हम देख लेंगे, बट क्यों होना है इस पे आपको काम करना है. कैंसिल मेडे नहीं बोल रहे हो, कैंसिल पैन पैन नहीं बोल रहे हो, डेस्टिनेशन सही चूज नहीं कर रहे हो, हिंट नहीं पकड़ रहे हो जो एग्जामिनर आपको दे रहा है. उसके अलावा सब कुछ सही था. ओवरऑल अच्छा लगा जैसे आपने सोचा, कुछ किया, कुछ करने की ट्राई की. एटीसीज भी करेक्ट बोले आपने बाद में, बागदोदर टावर कोई और कंफ्यूज हो जाता आपकी जगह पे. यू शोड दैट कॉन्फिडेंस, इट वॉज अमेजिंग टू सी. प्रायोरिटी नहीं याद रहा, हिंट पे हिंट दे रहे हैं, डेस्टिनेशन नहीं रहा, हिंट पे हिंट दे रहे हैं. आपको हिंट क्यों मिल रहा है, बिकॉज आपका कॉल बहुत अच्छा है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. वेरी प्राउड टू सी दैट. बस प्रायोरिटी का हिंट दे रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं आप, ठीक है, बट रैली वैली सब अच्छा था. एक दो जगह पे और सिली मिस्टेक हुई है. आपने डायरेक्ट रनवे पे टेक ऑफ मांग लिया, ऐसे नहीं मांगना है, एंटर करने के बाद ही मांगना है, इतना आगे नहीं जाना है, बट गुड थिंक है, चला, मुझे अच्छा लगा. टर्निंग लेफ्ट, टेक ऑफ लेग बहुत अच्छे से आपने सोचा, यहाँ आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिलेंगे. वेरी गुड. मे डे करा आपने, डिसरिगार्ड किया, फिर से कॉल लिया, मुझे इतना कुछ फर्क नहीं समझा दोनों कॉल में, टू बी ऑनेस्ट. पहला कॉल भी ठीक था मेरे लिए. ओवरवेट लैंडिंग नॉट पॉसिबल, यू आर कनेक्टिंग टू थिंग्स. यहाँ पे ये लॉजिकल नहीं है बिकॉज कंट्रोल्स अफेक्ट हो गए तो सेक्टर पे फ्लाई नहीं कर पाओगे सेफली. यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग एट पटना करना है. वी वुड लाइक टू रिटर्न बैक टू पटना एंड मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, ऐसे बोलना. रिक्वेस्ट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज ऑन स्टैंड बाय ऑन अराइवल, ऐसा बस यहाँ पे वो होता. ध्यान से लॉजिक लगाना है. कंट्रोल्स अफेक्ट हो गए, मैं क्या 20 मिनट सेक्टर में क्या रिस्क बढ़ाऊंगा. कंट्रोल्स अफेक्ट हो गए मतलब अनेबल टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट, क्विकली लैंड मी बैक. नियरेस्ट इज माय डिपार्चर ओनली, बिकॉज आई एम नॉट शेड्यूल्ड टू लैंड एट डिपार्चर, इट बिकम्स इमरजेंसी लैंडिंग. तो यहाँ पे थोड़ा इंटेंट परफेक्ट नहीं था, बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी कॉल की. रिक्वेस्ट फॉर द इंस्ट्रक्शंस बोल दिया आपने, ठीक है, प्लेड इट सेफ, गुड, कोई इश्यू नहीं है. बट कैंसिल मेडे नहीं किया, कैंसिल पैन पैन नहीं किया. देयर आर टू वेज यू कैन गो अबाउट इट. आइदर यू कैन से मेडे पटना टावर स्पाइसजेट 772 कैंसिल मेडे, बस इतना कर देते, मिस्टेक्स आधी हो जाती है आपकी. अब क्या होता है ना, कभी कभी आप पार्ट 1 अच्छा करते हो, लेकिन पार्ट 1 में कुछ मेजर एरर्स करते हो, तो पार्ट 2 वाइवा में उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, एग्जैक्टली जो मैंने किया. एंड अच्छी बात ये थी कि पार्ट 2 वाइवा में सब करेक्ट आंसर दे रहे हो. ह्यूमन ऑर्गन है तो सर मैं प्रायोरिटी मांगूंगी, कैंसिल मेडे करना है तो कैंसिल मेडे बोलूंगी, कैंसिल पैन पैन बोलूंगी, विल प्रोसीड एज पर फ्लाइट प्लान बोलूंगी. सही बोला. तो पार्ट 1 में क्यों नहीं किया आपने. ऑफ कोर्स नर्वस थे, प्रेशर था. तो यहाँ पे आपकी जो मिस्टेक्स थी वो मैंने चेक कर लिया और मुझे पता चल गया कि चलो इसको आता है, वहां ह्यूमन एरर की वजह से मिस्टेक्स कर दी होगी. गुड, ये होता है, ये होगा आपके साथ. जब ऐसी सिचुएशन में आपको पार्ट 1 का लाइव कॉल मांग रहे हैं, पार्ट 2 वाइवा में, आपको लिख कर देना है वो कॉल. रूल नंबर 1 ऑलवेज आई हैव सेड, व्हेनेवर सिमुलेटिंग अ लाइव कॉल, नो मैटर वेयर, यू राइट इट. बट गुड थिंग आप सोच के बोल रहे थे, सुनने में अच्छा लगा, बट लिखना है सब कुछ वहां पे भी. बट अच्छा एग्जाम्पल था. एग्जाम्पल देने से पहले आप सिचुएशन समझा दो. अगर सर ये फ्लाइट प्लान, ये हो रहा है, ये मेडे था, ये कैंसिल है, एंड देन अगर आप ऑल देते हो कॉल, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स और मिलेंगे. यहाँ पे बीच में थोड़ी डेड एयर थी, बिफोर यू सेड एस्टिमेट्स, और टाइम में बहुत गड़बड़ कर दिया आपने. 0060 कोई टाइम होती ही नहीं है.
है ना, वो 0060 क्या हो जाएगा, 0100 हो जाएगा। 60 minutes आई विल ऐड टू 1 hour। तो बीच में कंटिन्यूटी एक दो बार रह गई जो बिगिनिंग में होती है, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है उसका, बट मेरा काम है कि बताने, यार अब इतना परफेक्ट कर रहे हो तो मुझे छोटी मोटी मिस्टेक्स तो दिखनी है। परफेक्शन लेवल इज वेरी गुड, you have to bank upon it, but we cannot be complacent and we cannot be overconfident, but we have to be confident. So तुम्हारे लिए वो सब issue है ही नहीं, because your first mock is so good. If you work on the feedback, your second mock will be 80 to 90% level वाला minimum. But you never know, sometimes students give first two mocks 80, third fourth mock it becomes 40, 50, but the question paper was very lengthy, very tough. You had a little bit of assistance with the examiner because your call qualities were good, although you had technical error. And the examiner helped you finish the paper because he was also seeing the time and he realized that बंदी का सब चेक कर लेते हैं, बंदी अच्छी करके आई है, छोटी मोटी मिस्टेक्स है, ठीक है, देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं, पेपर तो पूरा करने दो। एंड द बेस्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी कॉन्फिडेंटली आंसर्ड, वेरी हैप्पी। वो लास्ट वाला आई एम नॉट श्योर करेक्ट है कि रॉन्ग है, प्लीज शेयर द रेफरेंस इफ यू फाइंड। थोड़ा R&D करना है पेपर पे, इसका मास्टर की वापस से आपको बनाना है, जैसे रानी को बोला कल बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट्स के साथ। But question number 5, very impressive, like bang Sir? on, 20 on 20. यार 16 तो मिनिमम मिलेगा ही उस पे आपको। थांबा थांबा। उसके Sending बाद back. उसके बाद जब भी हम करेक्शन बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, एवरीवन रिमेंबर, करेक्शन बोलते हैं जो लास्ट करेक्ट वर्ड था वहां से शुरू करते हैं। लेकिन आपने बोला क्या था, ये ओपीमो के बाद क्या बोला आपने, स्लो, देन आपने बोला करेक्शन एक्सपीरियंसिंग स्लो। तो करेक्शन के पहले करेक्ट वर्ड क्या था, 20 DME आउटबाउंड ओपीमो, स्लो करेक्शन, 20 DME आउटबाउंड ओपीमो, एक्सपीरियंसिंग स्लो डिक्रीज इन केबिन प्रेशर। ये करेक्शन का रूल है, जो लास्ट करेक्ट वर्ड था वहां से शुरू करो, या लास्ट करेक्ट फ्रेज भी हो सकता है, सिर्फ ओपीमो नहीं बोल सकते क्योंकि ओपीमो माइट नॉट मेक सेंस। ये फॉलो करना है करेक्शन पे, इसलिए आपको करेक्शन भी पूछा गया था पार्ट 2 वाइवा में। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, करेक्शन बोलना है तो जो लास्ट करेक्ट वर्ड था वो करेक्शन, वहां से वो वर्ड रिपीट करके नया वर्ड करेक्ट करना है ताकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कंटिन्यूटी रहे। थोड़ा सा डेड एयर आ गया था, डिक्रीज इन केबिन प्रेशर, रिक्वेस्ट फॉर द इंस्ट्रक्शंस के बीच में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनर एरर। बाग दोदरा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन थी, आप क्या करोगे, आपके पास जो चार्ट्स हैं सारे चार्ट्स को 1 to 8 सारे एयरपोर्ट्स का नाम का प्रोनाउंसिएशन देखोगी और गूगल प्रोनाउंसिएशन से कंपेयर कर लेना जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगता है। एक्स्ट्रा टाइम बचा ही है आपके पास, प्रेपरेशन ऑलमोस्ट आपकी पूरी हो गई है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप काम कर सकते हो जो इतनी ज़रूरी है भी नहीं, बट हो सकता है एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो कि दो सिमिलर साउंडिंग नेम हो, और कुछ भी हो सकता है, मैप कैसे भी आ सकता है। अच्छा लगा स्लो डिक्रीज केबिन प्रेशर तुमने पैन पैन बोला, बट यू डिडंट रिक्वेस्ट फॉर डिसेंट टू फ्लाइट लेवल 100 और 10,000 फीट। कम ऑन, केबिन प्रेशर चला जा रहा है, धीरे भी जा रहा है, तो रिक्वेस्ट डिसेंट फॉर फ्लाइट लेवल 10,000 फीट। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें और करनी है, वो विथ एक्सपीरियंस या विथ मेमोरी आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं आपने अच्छा नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है, ऐसे ही होते हैं एग्जाम्स में, हम सब कुछ नहीं करके आ पाते हैं, बट क्यों ना कर सके जब हम इतने अच्छे लेवल पे ऑलरेडी। So anything going wrong with cabin pressure and all, request for immediate descent to flight level 100 or 10,000 feet and then continue. वेट मत करो रैपिड डिकम्प्रेशन का यार, स्लो डिकम्प्रेशन है तो भागो भागो नीचे जाओ, कम से कम डिकम्प्रेशन पूरा भी हो गया तो ब्रीदेबल ऑक्सीजन है, इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते, कोई बेहोश नहीं होगा। तो थोड़ा लॉजिक वहां पे रखना है और पूरा करना है, बाकी तो लैंग्वेज बहुत अच्छी है। एक जगह पे आपने कॉल साइन नहीं बोला, शुरू में गुस्सा आ ही रहा था मुझे, मैंने थोड़ा टाइम दिया क्योंकि फर्स्ट टाइम था, एंड फिर तुम्हें याद आया क्योंकि वो सब फर्स्ट कॉल में है, इतनी सारी मिस्टेक्स कर रहे हो, एग्जामिनर ना हेल्प करे तो फर्स्ट मिस्टेक के वजह से आपका डोमिनो इफेक्ट बन सकता है। सो बी वेरी केयरफुल इन द फर्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैं बोलता हूँ 2 से 3 मिनट ले लो आप लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, चल जाएगा, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया एनीवे आपके 10 मिनट से पहले क्वेश्चन में गए हैं, इससे अच्छा वो 3 मिनट ले लो, 2 मिनट में कॉल कर लो, 5 मिनट तो बचेंगे ना आपके। तो वो एक चीज है जो फर्स्ट में सीख रहे हो कि मेरा पहला कॉल तो परफेक्ट होना चाहिए, और आराम से करूंगी तो परफेक्ट हो जाएगा। मेन मेन गिव अवे हमारा ये है यहाँ पे। एंड एंडिंग विथ कॉल साइन, यू कैनॉट स्किप। यहाँ पे मोर देन 5-10 सेकेंड्स का गैप तो ले ही नहीं सकते हो आप आरटी में, इट साउंड्स लाइक अरे कम्युनिकेशन फेलियर हो गया,
या आरटी नहीं आता सामने वाले को। तो अच्छा हुआ आपको टाइम मिला, आपने बोल दिया, बट आपको तुरंत बोलना। स्टैंड बाय बोलते ही बोल दो स्पाइस 772। प्रायोरिटी मांगी ही नहीं आपने, बस वो मांग लेनी चाहिए थी आपको। सिलचाल सिलचाल चल रहा है, हिंट मिल रहा है, ठीक है, यू टैकल्ड इट वेरी वेल, दैट वाज गुड। बस प्रायोरिटी मांगनी है स्टार्टअप कॉल पे आपको। कैंसिल करना है मेडे अर्जेंसी, इमरजेंसी लैंडिंग, स्लो कंप्रेशन, डिसेंट टू फ्लाइट लेवल 10,000 फीट। हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कुछ मिस हुआ है, और बहुत सारी सही चीजें करी है। जो मिस हुआ है वो डाल दो, सही चीजें तो कर ही रहे हो। गारंटीड आप पास हो जाओगे। पार्ट 1 क्या, पार्ट 2 क्या, पूरा लाइसेंस आ जाएगा 1.5 महीने में आपके पास। So if I have to give you certain marks, let's see how much you score. Although I know you will pass this, as an examiner बोल रहा हूँ मैं, मार्क्स तो देखें कितने आते हैं। प्रायोरिटी नहीं बोला, बट क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा आउट ऑफ 10, जैसे आपने हैंडल किया, अनेबल टू डिटरमाइन डेस्टिनेशन एंड ऑल, इट वाज गुड रैली, आई लाइक्ड इट द वे यू हैंडल इट, इवन दो विद द एरर्स, आरटी वाज मेंशन्ड। एक ग्रेस आपको इसीलिए मिल रहा है कि आपने अच्छे से किया है, नहीं तो 5 मिलता आपको इस पे सिर्फ। होल्डिंग शॉर्ट रनवे, अनदर एयरक्राफ्ट वाज गिवन क्लियरेंस, रिक्वेस्ट बिफोर मी, बिफोर अस बोल दो, मी मत बोलो, अस बोल दो, ठीक है। रिक्वेस्ट रीजन, यहाँ पे एक टेक्निक है स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन दैट सम अदर एयरक्राफ्ट हैज बीन गिवन क्लियरेंस बिफोर यू, आपके पास प्रायोरिटी है, आपको पहले जाना है। सो आपने पहले कॉल में मिस्टेक किया तो वो दूसरे कॉल में भी आ रही है। क्या थी वो मिस्टेक कि आपको प्रायोरिटी याद नहीं है। सी, पहली मिस्टेक अवॉइड कर लो आप बस। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे भूल जाते हैं करना, एंड फिर पास नहीं हुए, पास नहीं हुए, पास नहीं हुए। अरे कैसे हो गए, जब हमें जो करना है वो गलत करके आ रहे हैं, तो कौन पास करेगा, क्यों करेगा। सही चीज करो, पास हो जाओ, कौन रोक रहा है आपको। तो उस पर पहला फोकस होना चाहिए हमारा, बस। तो यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग हमारे लिए यही है, एंड इट इज बिकॉज इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को तो मन भी नहीं हो रहा कोई नेगेटिव चीजें निकालूं, बट अभी नहीं निकालूंगा, देन एग्जाम में हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा है। सो ओवरऑल ऑफ कोर्स एरर्स है, इसलिए आप देखो 20 में से 12 ही मिल रहे हैं सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, हायर फ्लाइट लेवल जिसका होता है ना, उसको पहले डिपार्चर मिल जाता है। ताकि, क्यों होता है ये चीज, इफ दिस इज 370, दिस इज 350, दिस इज 330 सीक्वेंस में, ठीक है, ऑल्टीट्यूड दिखा रहा हूं मैं। तो अगर मैं पहले इसको देता हूं डिपार्चर, इस प्लेन को, ओके, एंड उसके बाद अगर मैं इस प्लेन को देता हूं डिपार्चर, ऊपर वाली को, तो चांसेस है इनका कॉन्फ्लिक्ट होने का यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ एज एन एटीसी, जो पहले पहले एक बैक टू बैक सेम रूट पे जो लोग जाने वाले हैं, हायर हायर फ्लाइट लेवल्स को पहले मैं डिपार्चर दूंगा। तो पहले मैं एज एन एटीसी 370 को दे दूंगा, फिर एज एन एटीसी दूसरा 350 को दे दूंगा, एंड देन एटी एज एन एटीसी मैं तीसरा 330 को दे दूंगा। रीजन अच्छे से पूछा आपने, वेरी नाइस। हिंट नहीं पकड़े यहाँ पे, बिकॉज कुछ ना कुछ तो मिस होता ही है फर्स्ट पेपर में, ऐसी बात है, फर्स्ट प्रैक्टिस में। उनको 370 दिया है, तुम्हारा असाइन 350 है, दिस इज द रीजन। प्रायोरिटी है, यू कैन नॉट टेक डिले, ये आपको किक होना चाहिए था, क्लिक होना चाहिए था अंदर। क्या है, चलो तो मैं 390 मांग लेती हूँ, ओके। ड्यू प्रायोरिटी हैंडलिंग, ड्यू ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑन बोर्ड, वुड लाइक टू डिपार्ट फर्स्ट, रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 390। ये बेस्ट सोल्यूशन है इसकी। एवरीबडी प्लीज लर्न। You might not always give the proper solution, you might not always give the exact intent, still you will clear the exams, but there is always an opportunity to give exact also. So if you have time, be the best, is what I'm trying to say. अच्छा था ये, अदरवाइज ग्रेस आपको एक एक एक्स्ट्रा ही मिलेगा, इवन दो यू डन मिस्टेक्स, बिकॉज बेसिक्स, क्वालिटी, रेट ऑफ स्पीच, रिप्लाईज, फ्रेजेस, वर्ड्स, नो फम्बलिंग, कोई नहीं था, कुछ एरर नहीं था ऐसा बड़ा। वेरी नाइस, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एंड आई नो मुस्कान, 1-1.5 महीने से 2 महीने से आपने जब आरटी किया तब से बोल रहे हो सर मेरे को तो अभी से लाइव करना है, अभी से लाइव करना है। एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू व्हेन द राइट टाइम कम्स, एंड सी हाउ इट वर्क्स, and see how amazingly it has worked.
स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, आप बस ट्रेनिंग फॉलो कर लो A to Z, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना और आपको इसके ज्यादा। और वो नहीं कर पा रहे हो तो शेयर करो और मैं समझाऊंगा, फिर करो। इट्स इजी। ओके, आई एम टेलिंग यू, इट इज इजी। क्वेश्चन नंबर 2, टेक ऑफ लेग बहुत अच्छा था, 15 डिग्रीज टू अवॉइड बर्ड्स, बहुत अच्छा कॉल लिया, आपको 16 दे रहे हैं इस पे। मेडे अच्छा बोला आपने, डिसरिगार्ड ठीक अच्छे से यूज किया जैसे सिखाया है। थोड़ा डिसरिगार्ड बोलते हैं तो 5 सेकंड का गैप दे दो उस कॉल एंड इस कॉल के बीच में, थोड़ा सा कम, पर ठीक है चलेगा, यहाँ पे अच्छा था। ओवेट लैंडिंग, रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस, क्या करूँ, मेरे को आना तो है बट मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंट्रोल्स अफेक्ट हो गए हैं, अच्छा सेक्टर नहीं मांगा यहाँ पे। ओवेट बोला, सही बोला आपने। इमरजेंसी लैंडिंग बोलनी थी बस, वो मिस हो गया यहाँ पे, बट अच्छा था यूज। मे डे, मे डे, मे डे, फुर्सत में बोलो तो ही हमें प्रायोरिटी मिलेगा। मे डे, मे डे, मे डे, ऐसे नहीं बोलना है, लिखने में भी टाइम जाता है ना। प्रायोरिटी वर्ड्स, की वर्ड्स पे एम्फेसिस ज्यादा रखना है, जैसे कि मैंने बताया, डेस्टिनेशन, दैट कॉल साइन, योर कॉल साइन, सर्टन थिंग्स दैट आर प्रायोरिटी, रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो जिस पे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, वैसे ही मे डे, मे डे, मे डे, फुर्सत में। पैन पैन, पैन पैन, पैन पैन, अच्छे से। मेडे 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 सही नहीं लगता सुनने में, ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रावो, कैंसिल मेडे नहीं बोला, बड़ा एरर है यहाँ पे, बिकॉज मेडे कैंसिल नहीं हुआ है और मेडे कंटिन्यू भी नहीं हो रहा है, तो आपने कम्युनिकेशन अधूरा छोड़ा है आरटी में। हम क्या समझे, मेडे है नहीं है, आपने मेडे बोला, हमने डिट्रेस फॉर लगा दिया, सब लोग होल्ड पे है, आपको अटेंशन मिल रहा है, आप अचानक से बोलो यार मैं तो सब ठीक है, मैं घूम रहा हूँ, तो हमको तो बताओ, ताकि हम सबको बैक टू नॉर्मल कर लें। इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है सिर्फ कैंसिल मेडे बोलने का आफ्टर यू हैव सेड मेडे। तो लॉजिकल रीजनिंग आ गई ना, फिर यहाँ पे तो कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर बोलेगा यार कॉमन सेंस नहीं है तो पढ़ के आओ वापस जा, उनका क्या है। हाँ, उनको तो सिर्फ चेक करना आता नहीं आता, उनका काम थोड़ी है ट्रेन करना। बाकी सब अच्छा लगा मुझे, द वे यू कंस्ट्रक्टेड एंड ऑल। वो मेरा आप एंड 0060 एंड ऑल कुछ कंफ्यूजन हो गई, फिक्स इट। रेडियल डीएमईज प्लीज यूज करो, रेडियल डीएमईज इसमें दिख नहीं रहे हैं। यूजेज ऑफ रेडियल एंड डीएमई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा होगा। हर कॉल जहां एयर में हो, रेडियल डीएमई, रूट, फ्लाइट लेवल, टाइम एस्टिमेट तो होने ही चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बेसिक है। ऑन दिस विल गेट 6 on 10। सब क्वेश्चन है अल्फा ब्रावो तो 10-10 के हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन है जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 तो 20 मार्क का हो जाता है। ओके, नहीं तो आप सोचोगे सर कैसे कभी 10 में दे रहे हैं 20 में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा ब्रावो है तो अल्फा ब्रावो 10-10 हो जाएगा, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा लगा, आपने पैन पैन बोला, यू डिडंट आस्क फॉर डिसेंट टू फ्लाइट लेवल 10,000, करेक्शन, फ्लाइट लेवल 100 और 10,000 फीट। बाकी ठीक था, रेडियल डीएमई बोला, अच्छा लगा। फर्दर इंस्ट्रक्शन, रैली नहीं कर पाते बिकॉज एग्जामिनर न्यू के, शुरू में हुआ रैली, अच्छा लगा, चलो अब इसके कॉल्स देख लेते हैं, पेपर लेंदी है, टाइम लग गया पहले क्वेश्चन पे रैली के चक्कर में। व्हेन आई से रैली इट्स जस्ट बैक एंड फोर्थ टॉकिंग विच इज अनस्क्रिप्टेड, रियलिस्टिक। एंड देन अगेन कैंसिल पैन पैन नहीं बोला, सो एक मिस्टेक आपको 2 क्वेश्चंस में कॉस्ट कर गई, तो वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी डोंट डू सच मिस्टेक्स। प्रेजेंस ऑफ माइंड आना चाहिए, हमेशा चेक करना है, चलो एक क्वेश्चन पे मिस्टेक हो गई तो दूसरे में तो ना करें, ये भी आपको हेल्प करता है। एज अ पायलट वी ऑलवेज, एज एन एविएटर वी ऑलवेज चेक हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। इसलिए एक एक नई एयरक्राफ्ट को 10 से 15 साल लगते हैं सिर्फ टेस्ट फेज से गुजरने के लिए। गलतियां एक 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 कवर कवर कर कर करके, और गलतियां प्रैक्टिस पे ही निकलती हैं हमारी, इवन व्हेन यू आर डूइंग टेस्टिंग। तो जो पहला मॉडल आप बनाते हो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, बट आजकल कंप्यूटर्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही सब सिमुलेट कर लेते हैं, बट देन उसका प्रैक्टिकल बना के चेक करना सब सही है कि नहीं, इट्स अगेन अ लेंथी प्रोसेस। अभी मैं तो प्रोडक्शन में चला जाएगा और वापस आ गया आरटी में, आपसे नहीं हो रहा ठीक है, बट आप आरटी में अप्लाई करो ये सब। पैन पैन बागदोदा टावर स्पाइडर 772 ऑन 119.7, कैंसिल पैन पैन। केबिन प्रेशर बैक टू नॉर्मल, नॉर्मलाइज नहीं, नॉर्मल, ठीक है, बाद में जो भी आपने बोला। फ्लाइट लेवल ठीक है,
अगर आप वहां डिसेंट मांगते, आपको डिसेंट देते, आपका डिसेंट का कॉल सुनते, यहाँ पे आपको फिर से डिसेंट की जरूरत नहीं, यू वुड हैव क्लाइंब बैक टू 350 और यू वुड हैव मेंटेन व्हाटएवर फ्लाइट लेवल यू वेयर टू गो टू डेस्टिनेशन। वो सब होता है यहाँ पे, करना था, कर सकते थे अगर आप वैसा कॉल लेते तो। सो द वे यू टेक द कॉल, द होल content of your question paper and what the ATC is going to say and everything can also change in real life. Although they might have a master copy, but you also get that flexibility. We have never seen master copies. हो सकता है कोई नए एग्जामिनर्स उनको ट्रेन करने के लिए मास्टर कॉपीज दे रहे हो, बट इट इज सो ऑर्गेनिक दैट एनीथिंग कैन हैपन, यू कैनॉट प्रेडिक्ट, एंड दैट्स हाउ द एग्जाम्स आर. आपको लगता है हमेशा एक फिक्स सोल्यूशन होती है बिकॉज क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, आंसर 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 आंसर, उसके पीछे पड़े रहते हैं. इट्स नॉट ट्रू. कभी कभी एक ही हो गई, नहीं तो दो तीन चीजें हो सकती हैं. अच्छा लगा. कैंसिल पैन पैन नहीं बोला यहाँ पे. यहाँ पे आपको कम दे रहे हैं, फिर दोबारा से मिस्टेक रिपीट हुई है. बट ये पैन पैन वाला कॉल ठीक था, डिसेंड नहीं मांगा बस आपने, तो यहाँ पे फिर भी 7 मिल सकता है. And I'm not sure about question number 5 echo. Please confirm if you can supplement. Otherwise, बाकी तो मुझे अच्छा लगा. नोटैम का आंसर तो बहुत सही दिया तुमने. मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग तुम ये वर्ड में बोलोगी, मुझे लगा नोटैम रिप्लेसमेंट बोलोगी, बट अच्छा बोला आपने. आई मीन एग्जामिनर को सही लगे ना लगे, मुझे सही लग रहा है. इतना अच्छा बोला आपने. दे विल गिव यू मार्क्स ओवर देयर. अच्छे से बोला आपने सब कुछ. वेरी गुड. 4 4 4 4. यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, यू वेरीफाई एंड गेट बैक टू मी. सही होगा तो आप +4 कर देना अपने स्कोर में, सही नहीं होगा तो मैं कम ही दे रहा हूँ आपको. यहाँ पे 16 ही दे रहा हूँ यहाँ पे. थोड़ा मैं चाहता हूँ आप देख लेना. सर, 1 मिनट मुस्कान. स्टैंडिंग बाय. विक्टर टैंगो माइक सियरा लिमा. जो भी है लिख के रखो ताकि भूलो नहीं. तुम्हारे मार्क्स इतने ज्यादा है, मेरे को मेरा कैलकुलेटर सिंटैक्स एरर दिखा रहा है. इट वाज अ जोक. एरर तो दिखाया मुझे, पता नहीं क्यों दिखाया, बट इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, नॉट अ जोक. बाकी बच्चे लोग इतना चुप बैठे हैं. तो जनरली आवाजें शुरू, हाथ शुरू, सबको बोलना होता है. डिलीट. बोले सर आप बोलने आ रहे थे. हाँ, एक सेकंड ना बस मुस्कान. आई नो यू हैव अ लॉट. दिस इज योर स्कोर अभी के बेसिस पे. Congratulations. Please improve on your mistakes and you easily see you are scoring 90. Like प्रायोरिटी बोल देते आपको कम से कम +3 मिलता. दूसरे वाले पे भी प्रायोरिटी कनेक्टेड होती, दूसरा फ्लाइट लेवल मांग लेते आप, तो आपको कम से कम +2 और मिल जाता. तो 5 तो प्लस हो ही गए आपके मार्क्स फर्स्ट 2 क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब. क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, इतना रखते हैं इसको. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 मेडे में आपने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं बोली, वो बोलते तो कम से कम +1 तो मिल जाता. 6 मार्क बढ़ गए आपके. कैंसल बोलते तो आपको 2 मार्क मिल जाता सिंपल, तो आपके 8 मार्क बढ़ गए. ठीक है. पैन पैन में आपने वो डिसेंड नहीं मांगा, आपको कम से कम 1 मार्क मिल जाता. फिर कैंसिल नहीं किया, नहीं तो आपको कम से कम 3 मार्क मिल जाते हैं. ठीक है. एंड डेफिनेटली इफ ये सही है तो आपको +4 मिल जाएगा यहाँ पे. तो देखा जाए तो आपके सिली मिस्टेक्स हटा दो, कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं आपके? 4 + 3 7
plus 1 8 plus 2 9 10 plus 1 11 plus 2 13 and plus 3 16. अरे बाप रे, प्लस 16 कितना होता है? 86/100. कौन फेल करेगा पार्ट 1 में? बोलो मुस्कान, अब क्या बोलना? सर आई प्रैक्टिस, अब मिस्टेक्स नहीं होगी सर। कब से यही बोलना चाह रही हो? नहीं सर, और सर वो इन क्वेश्चन नंबर 5, if for example Victor Tango Romeo Echo Sierra is given, so do we have to write the whole spelling like VICTOR? हाँ लिख दो, आप लोग लिख दो. Okay. जो बोल रहे हो, जैसा बोल रहे हो, वहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में लिख दो. आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट लिख दो. देखो ना, मैंने भी लिखा है. सेकंड, पूछो पूछो आराम से. भूल गई क्या सब? मैंने थांबा थांबा बोला तो. सी, मैंने भी फुल फॉर्म लिखे हैं सारे. जहाँ नो टाइम बोला वहाँ नो टाइम ही लिखा है मैंने, बाकी फुल फॉर्म लिखे हैं. वैसे विक्टर टैंगो सिएरा को रोमियो में VTSER लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट तुम लिख दो बस. और क्या चले दिमाग में, पूछो. What do you think? I'm sweet talking, giving you extra just to make you feel good, or do you think you've deserved it? मिस्टेक्स के बारे में तो समझ गए, स्ट्रेंथ्स के बारे में कुछ समझ आया क्या? जनरली लोग हमें मिस्टेक्स ही पॉइंट आउट करते हैं. स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचो, कुछ अच्छा बोलो. तुम तो ये बोले सर मेरे से गलती नहीं होगी, वापस कर लूंगी. क्या गलती? कहाँ है गलती? छोटा मोटा गलती है ये सब. Of course you will improve on that. How do you feel about it positively? About your preparation, about your training, about your exam? For you it will be different because your performance is like this. And the good thing is कि चलो पेपर होने के बाद आपको खुद से समझ थी कि मैंने कुछ तो मिस्टेक्स की है. सारी नहीं पकड़ी तुमने, ह्यूमन ऑर्गन वाली एक नहीं पकड़ पा रहे थे, फिर भी तो प्रायोरिटी अच्छे से रिवाइज करो. कुछ डाउट है तो बोलो, हमारे पास टाइम है. 1-2 सेशंस हम करने वाले हैं, उसमें वो भी डाल देंगे. टॉक टू मी मुस्कान. Negative sir, I understood my mistakes. How is I'll a work part on 2? it. अरे मिस्टेक्स, वर्क ऑन इट, ठीक है. उससे ज्यादा मैं क्या सुनना चाहता हूँ? सर आई प्रिजर्व माई स्ट्रेंथ्स. जो कर रहे हो वो नहीं कम होना चाहिए. अभी तुम्हारे लिए टास्क ये है कि आप ऊपर पहुंच गए हो, आपको नीचे नहीं आना है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Affirm sir. टू रीच ऑन टॉप इज वन थिंग, टू स्टे ऑन टॉप इज द नेक्स्ट थिंग. पता है ना, ये सब सुने हुए ना कोटेशन, तो इतने पढ़ते रहोगे आप लोग सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स. हाँ सर. गुड गुड. बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग. ऐसा वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, बट अभी ऑल्सो बी प्राउड बिकॉज अच्छा लग रहा है. परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है. पार्ट 2 में क्या मिस्टेक्स थी, कुछ था? पार्ट 2 का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा था एक्सपीरियंस? The experience was good. I was not that nervous because you were the examiner. देयर आर सम स्टूडेंट्स जो मुझसे बहुत परेशान है, सो आई एम नॉट ऑलवेज दैट नाइस स्टूडेंट्स. डरना चाहिए तुमको. डर क्यों नहीं रहे हो? ठीक है. बट व्हेन आई एम डूइंग अ मॉक, आई जस्ट ट्रांसपोर्ट माई सेल्फ समवेयर एल्स एंड आई जस्ट बिहेव लाइक एन एग्जामिनर स्टूडेंट्स. सच बोल रहा हूँ मैं सोचता ही नहीं हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट हो. आई जस्ट थिंक कि एज एन एग्जामिनर स्टूडेंट को कैसे डील किया जाए बेस्ड अपॉन their part 1 performance, part 2 performance. I really simulate it as realistic as it could be. तो अगर तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, इट मीन्स एग्जाम में भी तुम्हारे साथ वही होने वाला है. तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो प्रोबेबली थोड़ा कॉन्फिडेंस हम और इंक्रीज करेंगे तो अच्छा लग जाएगा. सो ओवरऑल कैसा था तुम्हारा पार्ट 2 का एक्सपीरियंस? क्वेश्चन सारे आए, आंसर देने आए नहीं आए? एग्जामिनर सही थे नहीं थे, थोड़ा बताओ. क्योंकि आई वॉज नॉट देयर. एग्जामिनर्स थे, आप थे, मैं नहीं था वहां पे. उस हिसाब से मुझे बताओ. मुस्कान किधर हो? जल्दी. आयुष, व्हाट्स ऑन योर माइंड?
Sir, in question number 4, she says 20 DME outbound OPMO. वो डीएमई ओपीमो नहीं होगा बिकॉज वो वे पॉइंट है, उसको नॉटिकल माइल्स बोलना चाहिए था. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? Yes, sir. You make that correction. Students, DME reference. Muskan, for you also, Ayush pointed out, आपने 20 DME OPMO बोला, but वो DME OPMO नहीं होगा because DME will be co-located with VOR and OPMO पे शायद सिर्फ एक वे पॉइंट है. तो अगर आप OPMO से या कोई भी वे पॉइंट से अपना पोजीशन एस्टिमेट करते हो तो वो आप नॉटिकल माइल्स में करते हो, नॉट डीएमई. डीएमई रेफरेंस तभी यूज करोगे जब VOR रेडियल दोनों एक साथ रेफर कर रहे हो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर VOR. मुस्कान, यू आर ऑन म्यूट. समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? हाँ सर, आउटबाउंड बोला था. आउटबाउंड की बात नहीं हो रही है, डीएमई की बात हो रही है. डीएमई वे पॉइंट पे डीएमई नहीं होता है, VOR स्टेशन पे होता है डीएमई. तो डीएमई वर्ड आप सिर्फ VOR की इनबाउंड आउटबाउंड रेफरेंस पे लोगे जहां पे रेडियल भी बोलते हो. वे पॉइंट के रेफरेंस पे अगर डिस्टेंस इनबाउंड आउटबाउंड बोलना है तो नॉटिकल माइल्स करके बोलना है. ये बहुत पहले बोल चुका हूँ, वापस से याद दिला रहा हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग मुस्कान? यस सर. सो आयुष बोल रहा है कि सर उसने 20 डीएमई आउटबाउंड ओपीमो बोला है, बट ओपीमो पे डीएमई है ही नहीं. ऑफ कोर्स नहीं है. तो डीएमई बोल रहे हो तो आउटबाउंड बागडोगरा बोलो वहां पे. ओपीमो बोल रहे हो तो आउटबाउंड ओपीमो इन नॉटिकल माइल्स बोलना है आपको. डीएमई ओनली व्हेन यू आर ट्यून्ड इनटू अ वीओआर डीएमई जो आप स्क्रीन पे देखते हो. ओपीमो का आपका विजुअल रेफरेंस है या टाइम एस्टिमेट आपने बनाया. समझ लो, छोटा सा है ये पॉइंट. मुस्कान, आई अंडरस्टूड सर. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? यस यस सर. सबके लिए अच्छा लोग, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, I'm assuming आप सुन रहे हो. पता चला कोई वहां लंच कर रहा है, कोई लंच बना रहा है, सब चल रहा है. गुलशन, सर क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद मैक्सिमम कितने टाइम बाद हम कॉल ले सकते हैं? ऐसा कुछ मैक्सिमम नहीं है. क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही एग्जामिनर बोलेगा स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, आपके 25 मिनट शुरू हो जाएंगे. अब भले आप 20 मिनट बाद स्टार्ट करो, आपके ऊपर है. सर और जैसे पहला क्वेश्चन ट्रांसमिट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए टाइम ले सकते हैं ना? एक बार आपको गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, उसके बाद जितना टाइम लेना है लो. फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कोई रश नहीं है. ओके, टाइम थैंक यू लेके ही सर. करना है हर एक कॉल. गुलशन, ये सब चीजें इतनी बार बोल चुका हूँ, अब तक याद क्यों नहीं है? बोलो सर याद थी, बस कंफर्म कर रहा था, या फिर सर नहीं थी याद, अब बता दिया आपने, अब याद रखूंगा. जो भी अच्छे से सर बताओ. याद नहीं था सर, अभी अब मेरे को पता चला सर. स्टडी दिस राइट नाउ 2 मिनट्स. लिख के रखो कहीं, प्रॉपर समझ लो क्या है कि भूले नहीं अपन. नहीं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गया कोई फायदा नहीं. एग्जाम कल तो नहीं है ना हमारी. वी नीड टू गेट इन टू आर लॉन्ग टर्म मेमोरी. स्टडी करो इसको 2 मिनट अच्छे से. गुलशन, जो भी डाउट से पूछ लो. मुस्कान, क्या चल रहा है दिमाग में, बताओ. म्यूट पे हो आप मुस्कान. नहीं सर, कुछ नहीं सर. पार्ट 2 के बारे में और बताओ. कुछ पूछा मैंने, आपका डिस्कनेक्शन हो गया था. हाउ वाज योर पार्ट 2 एक्सपीरियंस? How was the examiners? How were the questions? Were you able to give the correct answers? I'm asking this because I was not there. Viva examiners the. I'm your instructor. You have come out of the exam and you're talking to me right now. Talk to me about that experience quickly ताकि फटाफट feedback दे दो. Anyway, we are overshooting our time. It was a good sir. I think on modulation, I guess that answer was wrong. रॉन्ग नहीं था, आपका एक डेफिनेशन में मिस्टेक थी बस. आप कंफ्यूज हो गए. एंड ये होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिक है. ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन होती है. ऑडियो फ्रीक्वेंसी इज योर इंटेलिजेंस, जो वॉइस आपको ट्रांसमिट करनी है. रेडियो फ्रीक्वेंसी इज योर कैरियर वेव. कैरियर वेव आपका एयरक्राफ्ट है. ऑडियो फ्रीक्वेंसी आप हो. आप खुद से अमेरिका फ्लाई करके नहीं जा सकते हो. आपको कुछ चाहिए बड़ा, हाई एनर्जी एंड ह्यूज, जो आपको वहां से वहां ट्रांसपोर्ट कर दे. दैट इज मॉड्यूलेशन. मेरे वॉइस है, आई वॉन्ट माई वॉइस टू गो टू डेस्टिनेशन जो अदरवाइज नहीं जाएगी, मैं कितना भी चिल्लाऊं. तो मैं क्या करता हूं, मेरे ऑडियो फ्रीक्वेंसी AF, आई सुपर इम्पोज ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव. एक पैसेंजर को एक एयरक्राफ्ट पे चढ़ा दिया और एयरक्राफ्ट को भेज दिया अमेरिका. दैट इज मॉड्यूलेशन. That one person is the audio frequency, the intelligence, the signal we want to transmit. And the carrier wave is like the bus. It's like the aircraft that carries the signal. That's why it's called carrier wave, because it carries the signal.
The whole purpose of carrier wave is to just carry it. So we need a system, modulator and demodulator. Modulator will superimpose audio, the intelligence, my voice, on a carrier, and this carrier will be transmitted, sky wave, this wave, ionospheric, whatever. And then at the receiver, provided both the antennas and everything are tuned and polarized correctly, at the receiver, demodulation will happen. Carrier को separate करो, audio को separate करो. यहाँ पे single sideband, double sideband, amplitude modulation आता है. सब पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से ये रखो. ये बहुत बेसिक चीज है. यहाँ हम लॉजिकल मिस्टेक नहीं कर सकते. यहाँ आपके डेफिनेशन इनकरेक्ट थे, लॉजिकल मिस्टेक थी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे थे इसलिए बच गए. अगर बाकी सारे क्वेश्चंस में भी एरर होता तो कॉन्फिडेंस एंड मिस्टेक्स डोंट मैच. तो यहाँ फिर अच्छा पार्ट 2 जाके भी हमें वो क्लियर नहीं करेंगे. बट यहाँ पे वो केस नहीं है बिकॉज एक में ही आपने मिस्टेक की, बाकी सब बहुत अच्छे से लेवल किया. सो इट्स ओके, यू गेट अ बेनिफिट ऑफ डाउट देयर. बट इट इज एज बेसिक एज व्हाट इज अ रेडियो वेव. तो वी कैन नॉट गो रॉन्ग. तो कैसे बोलेंगे? Modulation is a process of superimposing an audio frequency that actually carries the intelligence on a high frequency carrier wave that actually helps us transport this audio signal over the destination or the distances that we need, which on its own would not do because it doesn't have that energy. Why? Because a human voice is a very low frequency voice. 20 hertz to 20 kilohertz max. 20 kilohertz भी नहीं जाती है ह्यूमन वॉइस. थोड़ा गूगल करो, पता करो ह्यूमन वॉइस का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उसको अपने पार्ट 2 में डाल दो, ताकि बोल सकते हैं सर इतनी कम होती है ह्यूमन रेंज के, खुद से नहीं जाएगी ह्यूमन वॉइस. वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए मॉड्यूलेशन की जरूरत है. सिर्फ वायरलेस नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स, नेविगेशन सिस्टम सब में है. एंड फिर आप एमिशन कोड के बारे में भी बोल दो, मॉड्यूलेशन कौन सी यूज होती है एक दो सिस्टम में. डोंट वेट, सब बोल दो मॉड्यूलेशन के बारे में, टाइप्स भी बोल दो, सब बोल दो, फिर खुद ही चुप कराएंगे आपको. बट वो डेफिनेशन वहां गलत हो गया. सो यहाँ पे मुस्कान हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर आप स्टार्ट कुछ गलत कर रहे हो तो वो पूरा गलत हो सकता है. तो स्टार्ट पे फोकस रखना है, सिंपल है, कुछ बड़ा इश्यू नहीं है. आई एम श्योर सेकेंड पार्ट 2 पे आप कर लोगे. द वे यू गिव आंसर्स वाज गुड. यू डोंट यूज 2 वर्ड्स. डोंट से थैंक यू फॉर हैविंग मी, ठीक है, वो अभी नहीं यूज करेंगे. आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, वो आयनोस्फीयर है. सो वो यूनिवर्सल नाम है उसका, आयनोस्फीयर. आयनोस्फीयर बोलेंगे हम. एंड आपने जो बोला ना यू नो एंड आई नो, वो एग्जामिनर्स के सामने नहीं बोलेंगे हम, वो डिबेट में बोलेंगे इंडिविजुअल्स के साथ, वो आर इक्वल्स. वो डिप्लोमेसी में आता है, ठीक है, वो यहाँ यूज नहीं करेंगे. तो थैंक यू फॉर हैविंग मी नहीं बोलेंगे, वे बोलेंगे थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, रिप्लेस दैट, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. आयनोस्फीयर तो ठीक है. एंड लास्ट चीज क्या बोली मैंने आपको कि यू नो एंड आई नो हमें नहीं बोलना है. इट्स अ यूनिवर्सल नॉलेज ऐसा बोल सकते हो, और एज अ जनरल नॉलेज ऐसा बोल सकते हो. जहां भी आपको बोलना है सर वी बोथ नो एज अ जनरल नॉलेज, तो वहां पे आप वो वर्ड्स प्लीज कर लो. बस पार्ट 2 बहुत अच्छा था. यहाँ वहाँ कुछ मिस्टेक्स हो रही थी, ट्रिक क्वेश्चंस थे, आपको ऑप्शंस दिए, आपने पूरा किया. दिस इज हाउ वाइवास विल गो. Some examiners might talk a lot, some examiners might just ask you pointed questions. तो आपको इस बार एक्सपीरियंस मिल रहा है काफी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का. प्रोबेबली नेक्स्ट मॉक में आपको थोड़ा रूड और थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा. सो you'll get to see a lot. अच्छा लगा. प्रोपोगेशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बहुत अच्छे से आपने आंसर दिए. लोरेंसी वाज अ बिग टेक अवे, नॉट एवरीबडी रिमेंबर्स. आपको क्लिक हुआ लॉरेंज, आपने अच्छे से रीड किया है पार्ट 2, अच्छे से आंसर दिया. आपको बोला ठीक है आप एडीएफ तो बताओ. एग्जामिनर चाहता था आप एडीएफ को कनेक्ट करो वीओआर से और लॉन्ग रेंज नेविगेशन में यूज कर लो. बस लॉजिकल क्वेश्चन था ये, तो आपने किया, अच्छा लगा. बाकी एनेक्सेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, कैंसिल ये वो. बस शुरू में आप आंसर्स बहुत फास्ट दे रहे थे, धड़ 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 धड़. रिमेंबर, धीरे धीरे बात करो ताकि कम क्वेश्चंस पूछे जाएं और ज्यादा आंसर्स दिए जाएं. Strategy, be smart students. It's not fooling, it's like controlling the environment to work in your favor. About self में आपने कुछ ज्यादा नहीं बोला है, जबकि आप से बुलवाया जाना था, बिकॉज आपने इतना अच्छा किया है. दे आर पुशिंग यू टू योर लिमिट्स टू सी कितनी अच्छी है ये एज अ स्टूडेंट. तो मौका मिला है तो बोलते रहने का, विच यू ट्राइड. About self, generally students don't know how to go about it. I can give you an example. Let's say that I'm in one of the student face situation. So what will I say if somebody asks, okay, Alkesh, tell us something about yourself. Okay,
Thank you for the opportunity, sir. My name is Alkesh, born and brought up in Mumbai. I've had my initial education in Mumbai and my college in Mumbai and Pune. And since then, I've always been interested in education. So I also have studied other courses alongside with my major education. I have had my major education 10+2 in science and then in aviation, of course. And apart from the education right now, my goal after gaining knowledge is to become a commercial pilot. And that's the primary goal for which I'm here today. As a plan, I'll explain. My plan to become a commercial pilot is to go in sequence as it is a best situation for us or best strategy. Learning and clearing RT first, along with ground papers. And once I've cleared, I'm looking for a good flying school. So that is something that is happening. Along with that, I have a BSc graduation. So my whole and soul time and everything actually goes into the same. But other than this, I also like to watch movies, like to write books, maybe travel, or maybe just explore new places or new good things to new food to eat, or maybe just be creative. Or sometimes I just like looking at the sky and dream about the day when I will fly. I have my parents, I have my siblings, they all live here and there. And that's pretty much about me, sir. क्यों इतना प्रेशर लेने का? अपने लाइफ के बारे में हमें नहीं पता तो किसको पता? उनको थोड़ी पता होगा, इसका कोई करेक्ट आंसर थोड़ी है। वो थोड़ी बताएंगे नहीं नहीं तुमने गलत बोला है, ऐसा नहीं है, तुम खुद को जानते ही नहीं हो। ऐसा तो होगा नहीं ना। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो लोग खुद चुप नहीं कराते आपको। अच्छा, वाई पायलट मेरा ड्रीम था, अच्छा लगा सुन के। थोड़ा और सुनना चाहता था मैं, पैशन वैशन एंड ऑल, बट यू कवर्ड इट अप फॉर द वे यू हैव गिवन आंसर्स। वाई आरटी, यू स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग आरटी, अच्छा लगा। You're picking up the techniques given to you. Why RT? Generally, you should have linked it with the regulations that I explained initially. इसलिए वो क्वेश्चन पूछा था देखने के लिए कि आप लोग को याद है कि नहीं है। वो बोलते ना why RT? Because every commercial airline has to be fitted with an approved RT instrument as per the rule 63. कल भी मैं बोल रहा था, आज भी कोई रूल 63 की बात नहीं कर रहा है। करेक्ट है नहीं है, मैं तो बस पिक्चर मेमोरी से बोल रहा हूँ। किसी को पढ़ी नहीं है सब। जब तक सर लिखाएंगे नहीं और इंपॉर्टेंट बोलेंगे नहीं, तब तक तुम करोगे नहीं, तो ऐसा कैसे चलेगा स्टूडेंट्स? मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, फिर एक्स्ट्रा क्या चाहिए आपको, है ना? तो वो सब यहाँ पे ऐड कर देना, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ऑलवेज है हमारे पास परफेक्ट से परफेक्ट आंसर देने की। वाई आर टी, तो हमने वाई आर टी ऐसे समझा कि वाई आर टी फर्स्ट, उस हिसाब से आंसर दिया। बट क्वेश्चन एक्चुअली था आर टी क्यों कर रहे हो अगर पायलट बनना है तो? ये इनडायरेक्ट वे है आंसर करने का कि आरटी का क्वेश्चन पूछने का कि आरटी का इंपॉर्टेंस क्या है, पायलट बनने के लिए क्या चाहिए, कैसे पायलट बनते। इनडायरेक्ट इनफॉर्मल वे टू आस्क दैट क्वेश्चन विच यू लर्न पॉइंट टू पॉइंट। बाकी गुड मेमोरी ऑफ फ्रेजेस एंड ऑल, अचानक से फ्रेजेस पूछ रहे हैं और आप अच्छे से बोल रहे हो। करेक्शन क्योंकि वहां सही यूज नहीं किया, यहाँ पूछ रहे थे कैसे बोलोगे, वही चीज बोलनी है जो हमने सीखी है कि सर लास्ट करेक्ट वर्ड के बाद वही रिपीट करना है करेक्शन बोलने के बाद, और फिर करेक्टेड वर्ड बोलना है। बट ठीक है, यू क्लियर। पार्ट 2 भी अच्छा गया आपका। You will, if you do the similar thing, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा स्टूडेंट। तो congratulations, very happy। फाइनल अपडेट्स, थोड़ा एरर्स अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स, इजी एरर्स। बैठ के 15 मिनट एरर करोगे, समझ जाओगे। एरर पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलता है, क्यों? हर किसी को आता नहीं है। आप लोग को अच्छे से पढ़ा है ना? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। किसी को कुछ पूछना है बोलना है तो बोलो, नहीं तो चलते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं। Nukul, go ahead. Sir, no, sir, we know that whenever we descending, so we request to ATC for descent and they will give us a flight level. But in question number 4, we know that whenever the cabin pressure decreases, so we have to descend 10,000 RPM or below 10,000 RPM. RPM So, किधर जा रहे हो बच्चा? sorry, sir, flight level, sorry sir, flight level. कॉन्शियस रहो, भूख लग रही है, तुम्हें भी पता चल रहा है। वो Sir, बोल दो so ना, हंग्री माइंड नहीं चलता है। बोलो बोलो। sir, so whenever we request to the ATC, so can we mention the flight level for this in question number देखो, 4? जब आप डिसेंड करते हो ना, तो जनरली आप अगर 350 पे हो तो आप बोल सकते हो टॉप ऑफ डिसेंड, रिक्वेस्ट डिसेंड, वो आपको खुद दे देंगे। और कहीं ना कहीं आपको अगर पता है कि मेरा
मेरे को 150 पे उतरना है और बाकी के काम करने हैं, तो आप बोल सकते हो रिक्वेस्ट डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 150। खुद से भी मांग सकते हो, वो खुद से भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इनिशियल डिसेंड है आफ्टर क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड, तो जनरली डायरेक्ट मांगो तुम्हारे पास अगर डिसेंड का कोई डेस्टिनेशन ऑल्टीट्यूड नहीं है तो। अदरवाइज बोथ वेज कैन वर्क डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर अराइवल है, अप्रोच फेज में हो, उतरने वाले हो, तो आप बोल सकते हो रिक्वेस्ट डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 150। एग्जामिनर थोड़ा घूम जाएगा, एग्जामिनर बोलेगा नेगेटिव अनअवेलेबल, आप बोल सकते हो रिक्वेस्ट 170 और रिक्वेस्ट 130 फ्लाइट लेवल। वैसा भी हो सकता है यहाँ पर। सो गो विथ योर गट फीलिंग इन दिस केस। अराइवल के टाइम पे आप अपने आप को एक लोअर लेवल मांग सकते हो जहाँ पे आपका सर्किट वर्किट आपको करना होता है। You can go with whatever you feel like between the two options depending upon it. Cruise altitude पे आप डेस्टिनेशन डिसेंड वाला डेस्टिनेशन फर्स्ट जहाँ पे आपको नीचे आना है वो नहीं मांगोगे, चल जाएगा। बट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन जब आप ऑलरेडी आपको कॉल में पता नहीं है कहीं डिसेंड मिला है नहीं मिला और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हो, विद इन द विसिनिटी ऑफ एरोड्रोम आ गए हो, लास्ट कॉल 350 पे था, उस सिचुएशन में आप अज्यूम कर सकते हो कि आप ऑलरेडी 150 पे हो या 100 पे हो एंड वहां से 50 पे जा रहे हो। ये कुछ एजम्पशंस है जो आप खुद से वहां पे कर सकते हो, करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो वही जो एक दो कॉल्स में हमने देखा है एक्सपीरियंस में कि आप 30 DME 50 DME पे हो फिर भी आप फ्लाइट लेवल 350 बोल रहे हो, अप्रोच के कॉल्स हैं, थोड़ा लॉजिकली वो मिसमैच लगता है। तो ये आपको एज्यूम करना है चलो मुझे डिसीजन मिला ही नहीं है, कोई कॉल भी नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं आए वैसे, बट ऑफकोर्स 50 DME के आसपास हो डेस्टिनेशन की तो ऑफकोर्स मैं उतर गई रहूंगी या उतर गया रहूंगा। 100, फ्लाइट लेवल 70, फ्लाइट लेवल 80, कुछ भी हो सकता है। वो अजम्पशन रखना है आपको, भले किसी ने नहीं बोला, वो अजम्पशन कॉन्फिडेंस पे आएगा आपको कि चलो मेरे को ऑल सीक्वेंसेस ऑफ फ्लाइट तो पता है ना, तो वो तो कोई चेंज नहीं करने वाला है। तो उस हिसाब से फिर आप ये कॉल ले सकते हो। Affirm, sir. समझ आ रहा है? डिड आई आंसर Yes, योर sir. क्वेश्चन? Yes, sir. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। और बताओ रानी, कैसा फील हो रहा है? So she's confident, that is a good thing. And she did very well. रानी अपने बारे में बात करो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ मुस्कान। वेल सेड, करेक्ट है आपका ऑब्जर्वेशन, बट अपने बारे में बात करो। हाउ आर यू फीलिंग फॉर योर मॉक टुमारो एंड फॉर योर एग्जाम्स एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन? No, so I'm not confident, and I think I'm not that much prepared. And I thought सर कि मतलब डेट थोड़ा लेट आएगी, लेकिन डेट फर्स्ट डे पे एग्जाम है तो इतना टाइम नहीं मिल रहा है। और कुछ मतलब प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं, तो पढ़ाई करने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो कल के फीडबैक के बाद से अगर इफ यू हैव टू टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन, so how is that going? yes, I'm practicing. I read notes again, then format देख रही हूँ कि मतलब RCF कैसे, वेदर डेविएशन का। बट कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस का बस समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस का जो लेवल है उसको साइड में रखो ना, प्रिपरेशन की बात करो। कॉन्फिडेंस लेवल अभी प्रिपरेशन से हटा दो, जो है उससे काम चलाएंगे हम। प्रिपरेशन की बात करो बस, क्वालिटी ऑफ कॉल, कंटेंट, जो भी हमने फीडबैक लिया, टेक्निकल एरर्स जो थे उस पर बात करो। यस कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस गया, जो है उस पर काम कर लेंगे हम, डोंट वरी। जितना है आपका मैं आपको स्ट्रैटेजीज दूंगा, उसके बेसिस पे आप अच्छा परफॉर्म करोगे, डोंट वरी, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे मेरे को टेक्निकल एस्पेक्ट पे बताओ। आपको मैंने बोला था क्वेश्चन पेपर का एक करेक्ट कॉल फ्लो फीडबैक के बाद परफेक्ट कॉल्स बना के भेजने हैं, वो कुछ करने का टाइम मिला? हाँ सर, टाइम वो मिला, नहीं किया मिला? मैंने। यस, और फिर एक बार कंफ्यूज भी हो गई थी कि अगर स्टार्टअप कैंसिल बोला है तो फिर कैसे हम उसका आंसर करेंगे। कैंसिल नहीं है, नॉट अप्रूव्ड है। क्यों नहीं यस अप्रूव्ड है उसका रीजन पूछो, वो इशू फिक्स कर दो एंड वापस रिक्वेस्ट मांगो। वो रिक्वेस्ट मांगते मांगते एफआईसी एक्सपायर हो सकता है, डिले डिपार्चर हो सकता है, तो फ्रेश एफआईसी लग सकता है, एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर भी डिलेड होगी। इतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं, बस ध्यान में रखो। अभी बता दिया, रिवाइज करो जो मैंने बोला, अभी ट्राई करो। क्या होगा? कैंसिल नहीं होगा, वो डिनाइड होगा। पूछो क्यों और उसको फिक्स करो। कैंसिल है ही नहीं, कैंसिल होगा ही नहीं। कैंसिल होने के बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेंगे सब ठीक हो गया, जाओ वापस।
तो आप हमेशा से ये कैंसिल वाले पे क्यों अटक जाते हो, और हमेशा आपको वापस क्यों जाना है एप्रन पे? चेंज करो ना उसको। बता रहा हूँ ना, कैंसिल नहीं है वो, डिनाइड है। रिक्वेस्ट पूछो क्यों, उसको फिक्स करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। जाना ही है आपको, हवा में उड़ना ही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। कैरी ऑन। सर प्रैक्टिस करनी होगी मुझे कर और। रहे हैं ना प्रैक्टिस, कर रहे हैं ना। यस बट और चाहिए, और ज्यादा टाइम नहीं है। जो दो हो तीन रहा दिन है, क्या हो रहा है वो बताओ मुझे। क्या नहीं हो रहा है और क्या चाहिए उसके बारे में मत सोचो अभी। क्या हो रहा है, क्या कर पा रहे हो, क्या करने का प्लान है? मैं जैसे क्वेश्चन देखती हूँ तो वो कॉल पूरा फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ माइंड में। ये कैसे बोल रहे हो आप? कल तो कर रहा था आपने, दूसरा मॉक कल होने वाला है, तो ये कहाँ से आ रहा है? किसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो आप? नहीं, मैं खुद ही कर रही हूँ, मतलब खुद कर रहे हो आप प्रैक्टिस? खुद कैसे कर रहे हो? क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ। क्वेश्चन पेपर क्यों देख रहे हो जब रिवीजन करना है तो? क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन आई तो मतलब तो कैसे डील डिफरेंट करूंगी। सिचुएशन कैसे टैकल करनी हो तो सिखाया ना आपको ऑर्गेनिकली। यस। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने से क्या फायदा होगा? तुम समझ रहे हो गलती कहाँ हो रही है? जो चीज से नहीं। आपको नहीं पढ़ाया है वो चीजें आप रेफर कर रही हो, तो आप दो बोर्ड्स में हो अभी। ये जो सर ने नहीं पढ़ाया क्वेश्चन बैंक, इसका वर्कलोड इतना है, वही कवर नहीं हो रहा है। एंड उस वजह से जो सर बोल रहे हैं करने को, वो तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो दोबारा नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कभी भी बोला है आप लोग को कि वो क्वेश्चन बैंक करना जरूरी है? मैंने वो क्वेश्चन बैंक के बारे में क्या बोला है कि अगर आप बस इंटेंट देखो क्वेश्चन का, वो इंटेंट आपको नहीं आता है, वो क्वेश्चन का इंटेंट याद कर लो, अपने लिस्ट में डाल लो, बाकी सब कुछ जो सिखाया आपको वही करना है। ये समझ जाओगे तो ही क्वेश्चन बैंक करो आप, नहीं तो मत करो क्वेश्चन बैंक। तब कर रहे हो तो यही स्ट्रैटेजी से करो। सिर्फ इंटेंट देखो, बाकी कॉल स्ट्रक्चर सारा आपका है, वो कॉल स्ट्रक्चर मत फॉलो करो, वो किसी स्टूडेंट ने लिखा है जो गलत है। बहुत मिस्टेक्स है उसमें, कितने बार बोलूं मैं, नहीं तो मैं खुद नहीं दे देता क्या आप लोगों को? जस्ट बिकॉज वो पेपर्स एग्जाम में रिपीट हुए हैं आप लोग को चाहिए सब शॉर्टकट। अरे ऐसा नहीं होता है। आधे बच्चों को वो पेपर आएंगे, आधे बच्चों को नहीं आएंगे। तुम पढ़ भी लो और तुमको वहां से नहीं आएंगे तो क्या करोगे? ऑर्गेनिक कॉल से तो बनाने पड़ेंगे, तो ऑर्गेनिक पे चल रही है ना बात। तो क्वेश्चन पेपर्स को साइड में रख दो ना पूरा पूरा, अगर वहां से प्रॉब्लम आ रही है तो आप बस अपने नोट्स पढ़ो ना। अगर नोट्स के बेसिस पे हमारे बेसिक्स की तैयारी पूरी नहीं हुई है तो क्वेश्चन पेपर परफेक्ट कैसे सॉल्व होंगे? वो हमेशा इनकरेक्ट ही आएंगे। तो इट्स टू सून। अब टाइम जल्दी नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, डोंट वरी, एविएशन इज ऑलवेज गोइंग टू सरप्राइज यू। दिस इज दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनसीन। अब फॉर्म भर दी पहले पहले तो आएगा ना, मैं तो कब से बोल रहा हूँ लेट भरनी है, लेट भरनी है, लेट भरनी है। बट हम वो तो कर देते हैं पहले, फिर अब फॉर्म हमारी एग्जाम जल्दी आ गई तो क्या हो गया? हमने पढ़ रखा है, हमारे पास एक्सपीरियंस, लेट्स गिव आवर बेस्ट। समझना है हमें ये कॉन्फिडेंस, नहीं तो द वर्ल्ड इन एविएशन विल च्यू अस अप। वी डोंट वांट दैट। ओवरऑल बोल रहा हूँ आप सबको मैं ये चीज। कॉन्फिडेंस नर्वसनेस साइड में रखो। मैं भी सेशन स्टार्ट करने से पहले नर्वस फील करता हूँ, पता है तुम लोग को, स्पेशली व्हेन आई हैड अ गैप। दैट फर्स्ट लेक्चर फॉर मी इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन टेक। फॉर मी टू put the video on and make myself seated here is very difficult. तो सोचो पायलट को क्या फील होता होगा, और सोचो आपको क्या ही फील होगा एग्जाम में। डेफिनेटली ज्यादा फील होगा यार। बट इट इज नॉट अ वीकनेस। इट इज नॉट आवर वीकनेस। आवर वीकनेस इज आवर गैप इन आवर नॉलेज। यू फोकस ऑन दैट, रिवाइज एंड डिस्कस एंड टेल मी क्या आता है क्या नहीं आता है। टाइम है, मैं सिखा दूंगा। उस पे काम करते हैं। कल मॉक होने वाला है आपका, कल मॉक देखो कितना अच्छा जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर्स की जरूरत ही नहीं है। और बात रही सर वो उस सिचुएशन की जो क्वेश्चन पेपर्स में है जो मैंने नहीं पढ़े, उनका क्या करूँ? तो आपको टेक्निक दी है ना कैसे हैंडल करना है। वो टेक्निक पे एक और बार काम कर लेंगे दोबारा से। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर वो बस क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स मैं कितना भी पढ़ लूं खुद से नहीं दे पा रही हूँ, वो एक प्रॉब्लम है। तो आई टेल यू टू बर्न दैट बुक, बट बुक्स शुड नॉट बी बर्न्ड।
Many students have failed because of this. तो अगर ऐसा इशू है तो इसको फिक्स करो. टाइम है, सब आता है, सब पढ़ा है, तुमने सब मेहनत करी है, क्यों सोच रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है? मैंने आपको ये भी बोला है, एक दो मॉक थोड़ा सा आपका बचा है 19-20 का, यू डोंट नीड टाइम. जितना है वो हमारे पास काफी है. वी आर डूइंग डेली वर्क ना. एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग, आज मुस्कान का परफॉर्मेंस देख के आपको और बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें हमें खुद के बारे में कॉन्फिडेंट रहना है. हम नहीं रहेंगे तो हमें प्रमोट करने वाला और कोई नहीं है. तो हम लाइन में फिर पीछे रह जाएंगे और किसी को बोल भी नहीं पाएंगे. ये हम इंड्यूस करते हैं अपने में धीरे धीरे. ये सबके लिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गोइंग टू गिव फॉर द फर्स्ट टाइम. रानी, हाउ यू फीलिंग नाउ? So still I think I need more time. Now I will not prefer those papers. Okay, so I'll read the notes only, and I'll try to solve the questions which कौन you से have, क्वेश्चंस? which you will ask, which you will prefer. आज का क्या प्लान है? Okay, part 1 और part 2 both, part 2 का भी ज्यादा रीड करना, learn कल के करना. फीडबैक के ऊपर और कल के मॉक के ऊपर काम पूरा करना आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर टुमारो. आई डोंट नो वेयर यू स्टैंड ऑन दैट, बट यू हैव एम्पल ऑफ टाइम. J23 का प्लेलिस्ट ओपन ही रखा है मैंने आप लोगों के रिवीजन के लिए, क्योंकि एक्सेस में थोड़ा स्ट्रेस आ रहा था. तो आप जल्दी से जाके वो देख के उसको प्लेबैक स्पीड बढ़ा के अच्छे से मॉक के अपने फीडबैक पे काम करके वो फिक्स कर लोगे ना, काफी है. दिस इज हाउ द ट्रेनिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. डोंट डू एनीथिंग एल्स बिफोर डूइंग दिस. ये होने के बाद टाइम बचेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा. बचेगा टाइम, कल एक मॉक है आपका, पैनिक मत करो. एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो mention me your travel dates that you will not be available for a session, and tell me the dates that you are finally available for a session. अगर 10 को एग्जाम है, 8 को निकलना है, 9 को नहीं मिल पाएंगे, तो मुझे पता होना चाहिए कि सर 7 मेरा आखिरी दिन है या 8 मेरा आखिरी दिन है, आज मेरे को बता दो. रानी, मुस्कान, छवि, एवरीवन. ताकि उस हिसाब से चलो ठीक है, अपन एक दिन 8 घंटा बैठ के सेशन ले लेते हैं 2 ब्रेक्स के साथ, सब कवर हो जाएगा एक दिन में. मैं सारा प्रायोरिटी सिर्फ इसी पे है, आप लोग के ऊपर है. बच्चों को पूछो, ज्योत्सना को पूछो, शी इज वेटिंग फॉर ग्राउंड सब्जेक्ट्स एंड मुझे ही पढ़ाने, शी इज सो स्ट्रेस्ड. मुझे भी पता है, आई एम सो स्ट्रेस्ड. नुकुल का नया नया फाइनल प्रेप कराना है, रोहिता का नया फाइनल प्रेप कराना है, बिकॉज आई फेल सिक, रह गया थोड़ा सा. चैतन्य का तो कुछ बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, वो बोला मैं रिकॉर्डिंग पढ़ूंगा ही नहीं. मतलब पढ़ लो यार. नहीं पढ़ना, लाइव लेक्चर के लिए असाइन किया था. मतलब भाई 50 लेक्चर पढ़ लिए, 15 लेक्चर पढ़ने यार, बेसिक्स कवर्ड है यार, फायदे में रहोगे. नहीं करना. डोंट वरी रानी, बी कॉन्फिडेंट. कल मॉक करेंगे और आप मॉक के लिए रेडी नहीं हो तो मुझे बताना, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू. एंड इफ यू डोंट वांट टू डू अ मॉक इन पब्लिक, मुझे बता दो, मैं थोड़ा 1-on-1 करूंगा. किसी को नहीं बताएंगे आप क्या कर रहे हो. जैसा आपको सही लगे मुझे बताओ. आज का दिन है, उस हिसाब से अपन सब कुछ अच्छा करेंगे. ऑल दैट यू नीड विल डू, वी स्टिल हैव टाइम. आपको बिलीफ है नहीं है, ट्रस्ट मी, इन माई लाइफ लॉट ऑफ मिरेकल्स हैपन. मेरे लाइफ में मेरे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है तो उनके लाइफ में भी मिरेकल्स होते हैं, और मैंने देखा है. एनीथिंग इज पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अप. तो एग्जाम होने तक तो आप गिव अप करोगे ही नहीं, और रिजल्ट आने तक आप पॉजिटिव ही रहोगे. ब्लाइंड फेथ, कितना ही ज्यादा ब्लाइंड फेथ रखेंगे. डीप ब्रेथ्स. उससे क्या होगा ना, सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी. और आप देखोगे सिली मिस्टेक्स कम हो रही हैं तो 56 से 66 टू 70 पे पहुंच जाओगे. 70 पे तो डेफिनेटली पास होना है. उसी पे बस फोकस रखो. क्वेश्चन पेपर्स को प्लीज प्लीज, वो जो है जो घूम रहा है सर्कुलेशन में, उसको प्लीज कहीं रखो दूर. प्लीज अभी नहीं, कल के मॉक के बाद मैं बताऊंगा, जरूरत है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ रहने दो. इफ यू रिमेंबर आवर स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, उसको मैंने कभी नहीं दिया. मेरे पास था, उसके एग्जाम के 2 दिन बचे थे. मैंने बस बोला यार, सी आई डोंट वांट यू टू टेल मी दैट सर
कुछ था एंड आपने दिया नहीं, या तुम्हारा सब हो गया है, 2 दिन बच्चे हैं, ये ले लो, पीडीएफ कहीं से आई है, बस इंटेंट देख लेना, जो जो आपने नहीं पढ़े आंसर में इंटेंट देख ले, सिर्फ इंटेंट देख लेना. शी डिड इट फॉर अ फ्यू थिंग्स आई थिंक एंड शी सेड सर क्या है ये सब, मेरे को स्ट्रेस आ रहा है ये सब देख के, आई डोंट वांट टू डू दिस. मैं बोला आर यू श्योर? शी सेड या आई जस्ट वांट टू गो विद द वे ऑफ ट्रेन. आई एम लाइक गुड, फाइनली somebody इज कॉन्फिडेंट दैट जो पढ़ा है वो बहुत है यार. वो 2 दिन में होता भी नहीं, 1 दिन में होता भी नहीं, बिकॉज टाइम लगता है वो सब मगअप करने को. मगअप के लिए बोल भी नहीं रहते, इंटेंट भी. शी सेड सर आई डोंट नो, यू टॉट मी हाउ टू फिगर आउट इंटेंट इफ आई डोंट नो समथिंग, लेट मी गो विद दैट ना, इतना मेहनत किया है. मतलब ओके गो. उसको बहुत ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग इश्यू था स्टूडेंट्स. शी वॉज वेरी नर्वस. उनके इतने मॉक नहीं हुए जितने आप लोग के हो रहे हैं, उनका पार्ट 2 वाइवा भी ऐसा नहीं हुआ जिनका आप लोग का हो रहा है. वी स्पोक, जो मैं रानी को बोल रहा हूँ, जो मुस्कान को बोल रहा हूँ, वैसा ही कुछ इंडिविजुअली जो उन पे एप्लीकेबल है उनको बताया, उन्होंने सब लिया. दैट इज द डिफरेंस, दैट दे बिलीव इंस्टेड ऑफ व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ. This is where the instructor, a real educator, comes into place, where they challenge your beliefs that restrict your growth and help you see that some beliefs are unnecessary, negative. वो रियल एजुकेशन होता है. अब मैं इतना भी ज्ञान दे दूं, बट अगर रानी बोलेगी नहीं 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 मैं तो नर्वस हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को नहीं आता, तो ये ब्लॉक है जो हमें तोड़ना है एज अ टीम. हम काम करते रहेंगे उस पर जब तक जरूरत होगी. बट अगर आप एक्सेप्टिंग नहीं हो, अगर आप, अब मेरे को रानी ने नहीं बोला वो सब कर रही है, मैं उसके बिहेवियर से बोल सकता हूँ वो क्या कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली द ट्रुथ. अभी मैं कोई जीनियस तो नहीं हो ना स्टूडेंट्स. दिस इज अ रिलेशनशिप. This is how you succeed in the best possible way. You might not have seen such form of education anywhere else. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना. अभी कनेक्ट आ गया है सर के साथ. आई एम सेइंग दिस टू एवरीवन, ओके, नॉट जस्ट रानी. शी इज एक्सीलेंट wherever she is. She doesn't know, I know. Eventually she'll realize when she gets the results. So what happened with this student? She called me after the exam. ऑब्वियसली आई एम नर्वस बिकॉज एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट की, कोई फेल होता है तो मुझे ज्यादा बुरा लगता है, स्पेशली व्हेन पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग, इज द फर्स्ट एग्जाम, उनके भी डेडलाइंस है, सबके डेडलाइंस होती है. शी सेड सर आई डोंट नो मेरा पार्ट 1 कैसे हुआ, मैं तो 4 ही आंसर दिए, पार्ट 2 पता नहीं कैसा था सर. नेगेटिव 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 बट विद अ पॉजिटिव फीलिंग, बिकॉज सर ने बोला. वो एक था बस. मैंने क्या बोला, जिस दिन आपने बोला ना सर मेरे को ये पेपर नहीं करने हैं, जो पढ़ा है उसी से जाऊंगी, दैट वॉज द टाइम आई न्यू यू विल क्लियर. नाउ आई एम श्योर यू विल क्लियर पार्ट 2. शी सेड सर पता नहीं सर, डीजीसी वाले ने बहुत परेशान किया मुझे, एंड सर मेरे को नहीं लगता है होगा, बिकॉज दे जस्ट caught me off guard at some points and ये वो ले आए बीच में. I knew she would clear. जिस दिन रिजल्ट आया, I didn't know उस दिन रिजल्ट आया था. I feel मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है आप लोग के मैसेजेस के पहले ही. You all don't know how connected I am to this thing. एग्जाम डेट्स आई नहीं आई, आप लोग के मैसेज भेजने से पहले फील आ जाती है, और फिर मैसेज आते हैं, मैसेज देखने के पहले मैं बोल सकता हूँ मैसेज में क्या लिखा है किसी ने. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, आपको सक्सेस मिलेगा. सारी सीक्रेट शेयर करो आप लोग से फाइनल प्रेपर करके, और बिकॉज मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट विथ मी, मैं सब कुछ दे रहा हूँ आपको, अभी कुछ नहीं छुपा रहा हूँ. पता नहीं आप लोग को ये क्यों नहीं समझ आ रहा है, बाकी तो इतने अडल्टिंग करते हो आप लोग. जो आपको सक्सेस एंड हैप्पीनेस देगी लाइफ में, वहां अडल्टिंग क्यों नहीं कर पा रहे हो. देन शी, आई कुड सेंस शी वॉज नर्वस. जितना नर्वस हम होते हैं ना उतना वो कॉल पे थी. जब एग्जाम देने पे होते हैं ना वो कॉल पे थी. मेरे को भी सेम फील हो रहा था. एंड शी टोल्ड मी सर आई कांट बिलीव. 5 बार मैंने चेक किया कि वो मेरा ही नाम है. सर मेरा नाम था उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट. सर ये कैसे हो गया. सर ये आपके वजह से हुआ है. सर थैंक यू सो मच. सर बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ. टेल मी समथिंग, आई वांट टू गिव यू समथिंग. सर आप नहीं होते तो नहीं होता. मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा काम है. आई न्यू यू फॉलो ट्रेनिंग, यू क्लियर. सर कैसे लेकिन. अरे आपने जो फॉलो किया वो करो, आप पास. रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस इज अ
direct product of your preparation, and preparation is based upon knowledge. Knowledge is based upon studying. Studying is based upon training. Trainer is based upon trainer. तो जो ट्रेनर बोल रहा है वो करो ना चुपचाप. ट्रस्ट मी, ये सब होते रहता है साइड में. बुरा बहुत कम होता है, अच्छा बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, है ना. ट्राई ट्राई फॉर योरसेल्फ, प्रूव मी रॉन्ग. एक्सपेरिमेंट कर लो. फॉलो एवरीथिंग आई से एंड टेल मी यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स. एक और हमारा स्टूडेंट है, 2-3 टाइम से ट्राई कर रहा है. वो एक चीज नहीं समझता जो उसको हर बार सिखाता हूँ, एंड ही इज मेजरली अपॉन द क्वेश्चन पेपर्स ओनली ऑल द टाइम. उसके मैसेज आते रहते, सर मैं कहाँ अटक गया हूँ बताओ. अब वो एक चीज कितने बार रिपीट करूँ मैं, जो उसको समझनी नहीं है. तो वहां पे वो स्टूडेंट को आपको क्या करना होता है पता है? आपको इंटरवेंशन करना होता है. इंटरवेंशन साइकोलॉजिस्ट करते हैं. क्वेश्चन बैंक रट लिया है सारे. सर मेरे हिसाब से आपने जो सिखाया वो भी कर लिया मैंने, मल्टीपल बैचेस के लेक्चर्स अटेंड कर लिया, फिर भी मैं कहाँ लैक हो रहा हूँ. अरे बेटा क्वेश्चन पेपर करने ही नहीं थे तुमको. कितने बार बोलूं मैं? इट्स नॉट लाइक आई गिव अप, बट एवरी स्टूडेंट टेक्स देयर ओन टाइम. कुछ और भी मैटर होते हैं जहां पे वो नहीं क्लियर कर पाते ऐसी एग्जाम्स. बट दिस इज नथिंग कंपेयर टू द एग्जाम्स यू विल गिव फॉर योर सीपीएल फ्लाइंग ट्रेनिंग, फॉर योर टाइप रेटिंग. कम ऑन स्टूडेंट्स, कौन नर्वस नहीं होता? मैं बता रहा हूँ ना, एक सेशन के लिए मैं नर्वस हो जाता हूँ. बट एक बार आप बैठ गए ना, एक बार आपने स्टार्ट कर लिया ना, फोकस बनाए रखा ना काम पे. तुम्हारा काम है परफॉर्म करना, सिमुलेट करना, मेरा काम है पढ़ाना, सब अपने आप चला जाता है. बट एक बिलीफ होनी चाहिए, और वो बिलीफ नहीं रखेंगे हम, तो ओवरऑल लाइफ कैन बी अफेक्टेड स्टूडेंट्स. एंड हम ऑलरेडी इतने अकेले हैं लाइफ में यार. आई नो वे यू ऑल स्टैंड. तो कौन करेगा अगर हम खुद के लिए नहीं करेंगे तो? समथिंग टू थिंक अबाउट. ओके, डोंट टेक दीज थिंग्स फॉर लाइट like granted. दिस इज मोर देन गोल्ड. ठीक है रानी, डोंट वरी. फीडबैक पे काम करो, बेसिक रिवीजन करो, क्वेश्चन बैंक को साइड में रख दो थोड़े टाइम के लिए. कुछ मत करो, फीडबैक पे काम करो. शाम को मुझे एक अपडेट दो और क्या क्या चाहिए वो मुझे बताओ. सुबह कल मिलेंगे. थोड़ा बहुत आप लोग को मैं पार्ट 1 की कुछ ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद मैं आप लोग का मॉक लूंगा. एंड रानी, मुस्कान, छवि, एवरीवन एल्स, कुछ भी आप लोग को एक्स्ट्रा चाहिए आज बता देना मुझे, उस हिसाब से करेंगे पढ़ाई. आरटी आरटी का अच्छे से कर लेते हैं. प्रैक्टिस और करेंगे रानी, आप बोलो तो 3 मॉक और कर लेंगे. कल सुबह एक कर लेंगे, शाम को एक कर लेंगे, 15-15 मिनट के कर लेंगे, जैसा भी आपको सही लगे. गिव एंड टेक. एग्जाम देने का मन नहीं है, नहीं आना है बॉम्बे, बोलो सर मैं ट्राई करती हूँ, चेन्नई जाने दो ना, 2 महीने अच्छे से पढ़ के देती हूँ, और मैं वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट ऑल्सो. नथिंग टू फील बैड अबाउट. ऐसा मैं जा ही रही हूँ, मैं क्या कर लूँ? बॉम्बे आ रहे हो, आपको मिल लूंगा मैं, मिलके एक दिन आपको अच्छे से फाइनल आपको प्रेप करा दूंगा. तो दैट विल बी पॉसिबल, आई विल बी इन मुंबई, वो भी कर लेंगे. जो चाहिए वो बताओ. लेट्स कीप डूइंग व्हाट वी आर सपोज टू डू, दैट इज आवर वर्क. लेट्स नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. समझ रहे हैं सब लोग? इमोजीज चाहिए मुझे, हाँ या ना. Yes, sir. कितने बच्चे लोग सो गए प्रवचन सुन के? 2-3 लोग तो गायब भी हो गए क्लास से. मुस्कान, व्हाट्स ऑन योर माइंड? Sir, when will be my next mock? सरप्राइज रखेंगे तुम्हारे लिए, कभी भी ले लो है तुम्हारा, तो बी रेडी. कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, आज नहीं होगा. और ठीक है मुस्कान? मुस्कान, यू आर ऑन म्यूट. Affirm, sir. Affirm, sir. Sir, लेकिन प्लीज इवनिंग से पहले ही ले लो. तो भाई रख रहे हैं आरटी के सेशंस, इवनिंग तक कुछ नहीं जाएगा. इवनिंग तो नीड बेसिस पे किसको चाहिए, तो मतलब समझा नहीं Affirm, sir. तुम्हारा. Sorry.
I didn't understand. You don't want sessions in the evening, no? We will not have sessions in the evening. Don't worry. Final prep के sessions evening में मैं रखता भी नहीं हूँ. Headache हो जाता है बहुत. Generally, students को human factor kicks in under the pressure of exams. और कुछ डिमांड है ना स्टूडेंट्स, मुझे बता दो. छवि, what's on your mind? Sir, can I have my mock on 8th or 9th? I want to see how much you have finished Goal 22. Based upon that, please update me over WhatsApp. Sir, I requested you to make the videos available, but you didn't. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? WhatsApp पे दो ना अपडेट मुझे. Okay, sir. What else? Anyone? Ananya has left, right? She's not keeping well. ठीक है, कल ध्यान रखना सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं, एंड डोंट जस्ट अज्यूम सेशन में क्या होगा, प्लीज अटेंड. बाकी ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ. ओके स्टूडेंट्स, आई विल टेक योर लीव. अपना बस ट्रैवल डेट्स मुझे बता देना, सो आई नो व्हेन यू आर अवेलेबल एंड व्हेन यू आर नॉट. ओके, ताकि जितना हम पहले पहले कर सके फाइनल प्रेप उतना करेंगे. कीप अ पॉजिटिव माइंड सेट एंड जस्ट फोकस ऑन प्रेपरेशन. दैट्स इट स्टूडेंट्स. पढ़ते रहो बस, क्वेश्चन बैंक को मत हाथ लगाओ. सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ मैं. ना करोगे तो भी हो जाओगे पास यार. करोगे तो भी हो जाओगे, ना करोगे तो भी हो जाओगे, बट करोगे और ना हो जाओगे वो ज्यादा हो रहा है. मैं बता रहा हूँ ना आप लोग, इट्स नॉट द राइट मटेरियल. मेरे पास है ना, आप लोग अगर फ्री हो जाओगे ना एग्जाम से, तो मैं आप लोग को एक काम दूंगा. लिटरली आपको बताऊंगा कि आप कैसे अच्छा कंटेंट बना सकते हो, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर्स, एंड आई विल गिव यू प्रॉपर आंसर्स फॉर दैट. बट आई डोंट हैव टाइम टू कंपाइल. मेरे को स्ट्रैटेजी भी फॉलो नहीं करनी है, बिकॉज बट करा जाए ना तो मैं तो आपको बस ऐसा टेक्निक दे दूं कि 10 दिन पढ़ के आप गारंटी पार्ट 1 कर लो, अगर वैसा मटेरियल मेरे पास हो तो. दैट इज शॉर्टकट स्टूडेंट्स, दैट विल नॉट टीच यू एनीथिंग. मुझे क्या है, मैं तो पैसे भी कमा लूंगा, रिजल्ट भी 100 आ जाएंगे, एकेडमिक का भी नाम हो जाएगा, बट तुम तो नहीं सीखोगे ना. सो आई विल नॉट बी एबल टू गो टू बेड. समझ रहे हो आप लोग? तो तुम वो शॉर्टकट मत फॉलो करो. भले टाइम लग रहा है, बट आगे जाके बहुत काम आएगा आपको. ये सब याद करोगे फिर, है ना? चलो, टेक केयर एवरीवन. आई विल सी यू टुमारो 10 AM. ओके, थैंक यू सो मच सर. चलो आज मैं Thank you, जल्दी sir. जा रहा हूँ.